ceremony with us. Before starting this beautiful ceremony, I would like to ask all the delegates, जो कल शाम भी हमारे साथ में थे और जो जयपुर के बाहर से आए हैं, how was your evening at Nahargarh Fort? How did you enjoy it? थोड़ा तालियों से अगर आप बता देंगे तो मजा आएगा. Wonderful. Give you a best experience. Hope we are succeed in that. But जो कुछ रहा अगर छूट गया है definitely will improve. But I hope you enjoyed. थोड़ा गर्मी ज़्यादा है जयपुर में अभी, बट स्टिल आप लोगों ने जो सिटी टूर किया उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी. वेल वी हैव विद अस आवर एस्टीम्ड गेस्ट फॉर द डे. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे बीच में यहाँ पर सुरेश अग्रवाल जी भी पधार चुके हैं FORTI से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत. साथ ही ललिता कुचल जी भी हमारे बीच में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. रोटेरियन बलवंत चिराना जी ऑलरेडी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3054 के, और साथ ही रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी DSG RID 3054, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. हमारे सभी एस्टीम्ड गेस्ट का मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें. All right, so let's begin this beautiful day, and it is actually day 1 of the conclave, but it is day 2 of this beautiful journey. Yesterday we had the day 1 and we enjoyed, we danced and so many things, so many memories. Photos are coming soon. So let's begin this beautiful ceremony, and as we do, we will do the same way with the Deep Prajwalan. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एंड लिटिल डिफरेंट दिस टाइम, आई विल आस्क ओनली आवर females to come up on stage, and I'll ask Miss Mel, first pass ready of RMB Fellowship, please come up on the stage. I also request Rotarian Sujata Gururaj to come up on stage. I request Lalita Kuchhal ma'am to come up on stage for the Deep Prajwalan. I request Sunita Batra to come up on stage for Deep Prajwalan. I also request Dr. Kalpana, RMBF board member, I request आप भी स्टेज पर आएँ for the Deep Prajwalan. एंड साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा होनिता फ्रॉम मॉरिशस. आप सभी लेडीज से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शी इज़ नॉट हियर, ओके. सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑल द लेडीज प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डू द ऑनर. सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं. So here we begin our day with this Deep Prajwalan. Ladies and gentlemen, big round of applause. We have with us on stage Miss Mel, First Pass Lady of RMB Fellowship, Lalita Kuchhal ji from FORTI Women Wing. We have Dr. Kalpana with us, Sunita Batra and Sujata Gururaj with us on stage, and doing this honor. ये एक शुभ शुरुआत है, प्रभु के आशीर्वाद के साथ में हम लोग प्रभु को याद करके उनका वंदन करके इस शुभ शुरुआत में उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारा ये पूरा प्रोग्राम जो है सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चले. That's what we are looking for. And
We are going to start our program officially now. We have our guests with us, our delegates with us from various cities and जो हमारे खास esteemed guest यहाँ पर हैं, सुरेश जी अग्रवाल हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, बलवंत चिराना जी हमारे बीच मौजूद हैं, नीरज जी मौजूद हैं, ललिता जी मौजूद हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में यहाँ पर आरएमबी के 15 से ज़्यादा चैप्टर से लोग आए हैं जो अलग अलग शहरों से हैं। चैप्टर मीन्स लाइक एक शहर में मल्टीपल चैप्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक एक भी काउंट करें तो 15 से ज़्यादा शहरों से लोग यहाँ पर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अमेरिका से हमारे मार्क और मिसेस मार्क यहाँ पर मौजूद है जो खास इस कॉन्क्लेव के लिए पधारे हैं। मॉरिशस से हमारे बीच में यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट एवर कॉन्क्लेव ऑफ आरएमबी फेलोशिप। सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी अ मेमोरी। सो आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मेमोरी को आप जितना ज़्यादा खुशनुमा बना सकें उतना ज़्यादा आप खुशनुमा बनाएं और एक हैप्पी मेमोरी लेकर वापस अपने शहर जाएं। बहुत सारा बिजनेस आपको मिले, बहुत सारा बिजनेस आप करें, यही हमारी दुआ है। एंड आई एम श्योर कि देर आर पीपल हु आर लिटिल weak in Hindi and I'm little weak in English, so I'll try to convey my best possible. So for the next and the opening of this beautiful ceremony, I now request on behalf of RMB Jaipur team, our chairperson for RMB Jaipur, Mr. Arvind Batra, please come on stage and do the welcome speech, do the welcome of our esteemed guest and all the our delegates. Mr. Arvind Batra, who is the backbone of this event. Ladies and gentlemen, big round. Good morning to all. Sound नहीं आई. Very good morning. Thanks. So, first of all, thank you all of you. On the behalf of RMB Jaipur chapter, I welcome all of you. First of all, thank you Sachin sir to giving us opportunity to have first ever conclave at Jaipur. Thank you. And Mr. Mark and Mel, you travel so long to reach here and give us blessings. Thank you so much. Mr. Rajamohan, thank you so much giving us opportunity. And backbone of a district, DG Balwant Chirana जी, जो अपने इतने बड़े आज इनका इतना बड़ा इवेंट है डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद भी आप बता दें. थैंक यू सो मच सर. डीएसजी बलवंत, डीएसजी नीरज जी, थैंक यू सो मच. और जब मैं सुरेश जी के पास गया FORTI में, तो मैंने बोला सर एक इवेंट है और ये हमारा ऐसे आना है, तो विदाउट एनी डिले आपने यस बोला, उसके लिए धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच ललिता जी फॉर वुमेन विंग, FORTI वुमेन विंग. मैं सबको तो थैंक यू बोलूँगा ही, लेकिन एक सबसे बड़ा थैंक यू हम एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं. नूरविन प्लीज़ फ्रॉम मॉरिशस. और आरएमबी की सबसे बड़ी खासियत आपको बताऊं कि हम दोनों ऑफिस पार्टनरशिप में चलाते हैं, मॉरिशस में दोस्ती है. अब इसको मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा ना यार मैं बिज़ी हूँ रवांडा में, तो नेक्स्ट फ़ोन मैंने इनको किया, आना है. तो नेक्स्ट सेम इवनिंग ही मेल्स टू मी दैट वी आर कमिंग देयर. थैंक यू सो मच. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए. इतनी गर्मी में आप सबने हमारा साथ दिया. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इवेंट को अच्छे से अच्छा बनाएं आपकी पार्टिसिपेशन से. और जो मुझे वेलकम करने के लिए बोला है, वेलकम मैं अकेला नहीं करना चाहूँगा, मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम को. विद इन एक सेकंड जल्दी आप प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं प्लीज़. मैं आरएमबी जयपुर टीम. Thank you once again.
and welcome all of you. थैंक यू सो मच अरविंद जी, और आई होप ये आरएमबी जयपुर के जो फेसेस आपने यहाँ पर देखे हैं, दे ऑल आर इक्वल एंड दे वर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस इवेंट, एंड बीइंग अ होस्ट वी वेलकम वंस अगेन एवरीवन इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इवेंट. सॉरी, क्योंकि कोई भी इवेंट बिना पैसे के नहीं होता, तो स्पॉन्सर हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अरविंदो जी, आई फॉरगॉट योर नेम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम. प्लीज स्टैंड अप वंस अगेन. एंड मेरा उन सभी स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया, एंड अगेन थैंक यू. अरविंद जी, हम शायद सेम वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं, कभी कभी मिसमैच हो जाती है. मैं यही कहने वाला था, हमारे स्पॉन्सर्स को थैंक यू कहने वाला था. थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया. अरविंदो, मैं आपको जब ये भी मेंशन किया यहाँ पर अरविंद जी ने, ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड थैंक धामानी एंड कंपनी, इटर्नल हॉस्पिटल, माहेश्वरी गारमेंट्स, सरदार धाम, GBPS 2024, Meherwal Opticals, and साथ ही this beautiful setup and event is managed by Innovative Events and Wedding Planners, जिन्होंने ये सारी मैनेजमेंट की कमान संभाली. आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ इसी कड़ी में अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे कह सकते हैं पैटर्न है, हमारे संरक्षक हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी का स्वागत करने के लिए, एंड आरएमबी के बारे में उनके जो विचार हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर डीजी रोटेरियन बलवंत चिराना जी ऑन स्टेज. मैं बलवंत चिराना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज आप स्टेज पर आएँ. आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन बलवंत चिराना जी, एंड say your thoughts about this event, the first ever conclave of this RMB fellowship. पहले आपको बोलना है, फिर हम आपका स्वागत. ऐसा पहली बार हो रहा है, पहले बुलवा रहे हैं, बाद में स्वागत करेंगे. नहीं नहीं, इट्स ओके. रोटरी मीन्स बिजनेस के इस कॉन्क्लेव में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं डिस्ट्रिक्ट 3054 की तरफ से स्वागत करता हूँ. माई स्पेशल थैंक टू मार्क एंड मेल, सचिन सर, फॉर योर benign presence on this important event, and you have traveled a lot and you are here. And District 3054 is highly thankful to Sachin sir to give this opportunity to our RMB Jaipur chapter. बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ. मेरा अपना मानना है कि पूरा जीवन बिजनेस होता है. बिजनेस का मतलब केवल माल बेच करके और प्रॉफिट कमा लेना नहीं होता है. बिजनेस में भावनाएं भी, कोई भावनाओं के लिए व्यापार करता है, डील करता है. रिलेशंस हमारे सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में, मुझे लग रहा पूरी दुनिया में रिसर्च कर रहा था कि देख रहा था कि हम सब लोग बिजनेस करते हैं. हमारे चाहे वो रिलेशंस हों, हमारे चाहे वो फैमिली की बॉन्डिंग हो, कहीं ना कहीं हम सुख भोगने के लिए, सुख का लाभ लेने के लिए बिजनेस करते हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि रोटरी की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बिजनेस का पर्पस था. रोटरी मीन्स बिजनेस बहुत देर से आया, लेकिन जिस दिन रोटरी की स्थापना उस समय क्लासिफिकेशन का रूल था और कंपटीशन खड़ा नहीं हो जाए मेंबर्स में. मैं समझता हूँ शायद ये भी एक फीलिंग रही होगी तत्कालीन लीडर्स की. लंबे समय तक हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन का रूल रहा कि एक प्रोफेशन का एक आदमी रहे. तो बिजनेस एवरीवेयर है. मैंने पिछली बार भी कोट किया था कि बिजनेस नहीं है तो इस दुनिया में कुछ नहीं है. और अब जब मेंबरशिप की क्राइसिस से, मार्क व्हेन वी आर facing problem for membership in Rotary, every year we are trying to get maximum members, but the level is the same. We inflow of the members is good, but outflow is very high, so we do not maintain the proper maintenance that membership. Only and only
RMB is the hope which can sustain the members, which can extend the members. This is members जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि और रोटरी को भी ग्रो करेगा। और इसलिए मेरी जहाँ भी रिकमेंडेशंस चलेंगी या जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे कहना होगा, आई विल प्रमोट RMB कि भाई अगर रोटरी में हमें ग्रोथ लेकर के आनी है तो वी हैव टू मोटिवेट RMB, वी हैव टू गिव प्रॉपर स्पेस टू RMB इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। और राजस्थान में पर्टिकुलरली इन जयपुर, इन आवर डिस्ट्रिक्ट 3054, you have organized such a wonderful program. So definitely in the future RMB will get proper improvement in our area. और अगर हमारे हर क्लब्स के साथ चैप्टर्स बनने शुरू हो गए और वो चैप्टर्स मैं क्योंकि हमने इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। माय असिस्टेंट गवर्नर रितु वैष्णव इज हियर। हमने उदयपुर में पहले RMB डेवलप हुई और उस RMB में से एक उदयपुर उद्यम क्लब मैं पूरे आपके पूरे प्रोग्राम में रहता, पर आप सबको पता है आज डिस्ट्रिक्ट असेंबली अभी 11:15 बजे शुरू होगी और बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आई हैव टू बी देयर। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको सबको धन्यवाद इस आयोजन के लिए। आई होप कि आपका ये आयोजन इस RMB को हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे इंडिया में नई दिशा देगा, नई रोशनी देगा, नई प्रेरणा देगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, our District Governor. Now I request Arvind Batra, please come up on stage and do the honor. सर, आप पैट्रन हैं, हमारे संरक्षक हैं और हम चाहते थे कि आप अपनी बात कहें। और अब क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं और अतिथि के रूप में भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अरविंद बत्रा जी से कि प्लीज़ आप हमारे आज के जो गेस्ट हैं बलवंत चिराना जी, उनको साफा और मोमेंटो पहनाकर यहाँ पर उनका स्वागत करें। बलवंत चिराना जी का साफा और मोमेंटो देकर उनका यहाँ पर थैंक यू कहें। बीइंग ए पैटर्न हम चाहते हैं कि पहले वो अपनी बात करें, फिर हम स्वागत करें उनका। आई रिक्वेस्ट आवर LED ऑपरेटर, प्लीज बलवंत चिराना जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा फोटो हमने क्रिएटिव के रूप में आपको थैंक यू वाला जो फोल्डर है उसमें दिया हुआ है, उसको खोलिए और उसको चलाइए। ये जो सम्मान देने की बात हुई ना, सम्मान देना किसी भी गेस्ट को एक तरह से उसके आने का, उसको आने की उसको वेजेज मिलती है। बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें, वो एक गांव में एक आदमी 100 रोटी खाता था एक टाइम में। तो एक खूब चर्चा थी, एक सर्कस का मैनेजर गया, उसने कहा कि देखा यार ये तो आदमी जोरदार है, 100 रोटी एक टाइम में खा जाता है। तो बोले तो मेरे सर्कस में शो करेगा? हाँ। बोले चलिए करूँगा। तो उसको सर्कस में लेकर के आ गया और सर्कस में 12 बजे के शो में 100 रोटी दे दी, 3 बजे के। Your presence and once again we welcome you and with this memory we would like to say कि अगर आपको समय हो आज और कल में फिर से पधारिएगा और हम सभी लोगों को यहाँ पर गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट वेलकम एंड फॉर द मेमोरी आई रिक्वेस्ट चाहूँगा सर के वेलकम के लिए यहाँ पर राजेश जी आप पहले आए, फिर हमारे गेस्ट यहाँ पर आए, उनको एस्कॉर्ट करते हुए आप उनको लेकर आए। नीरज सर प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ एंड मैं चाहूँगा राजेश खत्री जी पहले उन्हें साफा पहनाएं, यहाँ पर उनका स्वागत करें और उसके बाद में हम उनको थैंक यू भी यहाँ पर कहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले साफा पहनाकर जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड अप्लॉज फॉर रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी, आर DSG RID फॉर 3054। सर आपका बहुत बहुत स्वागत एंड धन्यवाद। एंड साथ ही मैं चाहूँगा कि इनको सर को मेमेंटो भी जो है नीरज सर का वो यहाँ पर लेकर आया जाए। नीरज सर, आई एम श्योर कि आप भी सर के साथ में ही पधारने वाले हैं फॉर दिस एंड वी विश के आप वापस आएँ समय निकालकर और हम सभी को गाइड करें। थैंक यू सो मच नीरज सर। आई रिक्वेस्ट इफ यू वांट टू से फ्यू वर्ड्स टू आर सर। आइए नीरज सर प्लीज। Good morning.
इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि ऑल द बेस्ट अभी के लिए बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। हम सब अपना बिजनेस एक्सचेंज करने आए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जल्दी से। हम लोग आप सब ना अपने घर में हवन करते होंगे, कभी कोई हवन होता होगा फैमिली में, तो पंडित जी सबको थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री दे देते हैं और बोलते हैं कि मैं जब स्वाहा बोलूं तो थोड़ा सा उसमें अग्नि में वो हवन सामग्री स्वाहा करी जाए। थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर योर प्रेजेंस एंड योर वर्ड्स। एंड इसी कड़ी में अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि बलवंत सर और नीरज सर को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जाना है, बट हम उनके थोड़े से मिनट्स और यहाँ पर लेना चाहेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट वंस अगेन बलवंत चिराना जी ऑन स्टेज फर्स्ट। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए आप एक बार स्टेज पर आएँ, क्योंकि हमारे जो डेलीगेट्स हैं मैं चाहूँगा कि उनका भी आप यहाँ पर वेलकम करें। उनके एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोग यहाँ पर उनका वेलकम करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट, अब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा वो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ ब्रेक्स के अंदर जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं उनको एक एक करके यहाँ पर इनवाइट करेंगे। वी आर गोइंग टू प्ले देयर क्रिएटिव ऑन स्क्रीन, जिसके अंदर उनका बिजनेस, उनका क्लासिफिकेशन मेंशन होगा। आई विल ऑल्सो स्पीक अकॉर्डिंगली। साथ में आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा मेंबर किस बिजनेस से है, किस सिटी से है, किस चैप्टर से है, तो आपके लिए समझना अच्छा रहेगा। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आरएमबी। सो आई रिक्वेस्ट बलवंत सर, प्लीज बलवंत चिराना जी, एक बार आप स्टेज पर आएँ। एंड 1 बाय 1 मैं जिनका नाम यहाँ पर ले रहा हूँ वो लोग प्लीज स्टेज पर आएँ और आपको यहाँ पर हमारे जो आज स्टीम्ड गेस्ट हैं एक दुपट्टा पहनाकर आपका स्वागत करेंगे और आपका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर सभी के सामने होगा। सो सबसे पहले मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेंगलुरु चैप्टर बी रेडी। आपको सबसे पहले हम बुलाने वाले हैं 1 बाय 1। सो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट डॉक्टर कल्पना श्रीलता प्रभाकरन ऑन स्टेज। एंड डॉक्टर कल्पना श्रीलता प्रभाकरन बेंगलुरु चैप्टर से हैं, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। आपकी क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आपकी कंपनी का नाम है डाटा क्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आप डील करती हैं CRM, HRMS, ERP, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग में। ये सारी डिटेल जो है वो RMBN डॉक्टर कल्पना श्रीलता प्रभाकरन की है। आप बेंगलोर चैप्टर से हैं। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज टेक योर सीट। इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगा शिखा डड्डा को। शिखा, वेयर आर यू? इज शी हियर? मधुसूदन RBD को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। नेक्स्ट RMBN मधुसूदन BD is from RMB Bangalore chapter. Classification is he is advocate and accounts outsourcing. एजिका कंसल्टेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम है और आप अकाउंट्स एंड टैक्स आउटसोर्सिंग में डील करते हैं। तो जोरदार तालियों से हम हमारे RMBN मधुसूदन BD का स्वागत करेंगे। एंड आप बैंगलोर चैप्टर से हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर ज्योति बसु, प्लीज कम ऑन स्टेज। अब आपकी बारी है। एंड in between I'm making a little change, so be patient। सबका नाम आने वाला है यहाँ पर, सबका वेलकम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ज्योति बसु यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, मदुरई चैप्टर से। आपकी क्लासिफिकेशन है मोबाइल फोन LED TV सेल्स एंड सर्विसेज। आपकी कंपनी का नाम है तमिल मोबाइल फोन्स LED TV सेल्स एंड सर्विसेज में आप डील करते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू सो मच। इसी कड़ी में नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट मिस्टर नीलेश कापसे। नीलेश सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज कम ऑन स्टेज। नीलेश सर इज फ्रॉम बेंगलुरु। क्लासिफिकेशन है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर वेब एंड प्रिंट। आपकी कंपनी का नाम है ALPS इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप डील करते हैं ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मीडिया में। सो नीलेश सर, वेलकम टू जयपुर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे जयपुर के इस कॉन्क्लेव में। थैंक यू बलवंत सर, प्लीज टेक योर सीट। मैं नीरज सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आप आइए 2 मिनट के लिए स्टेज पर। इसी कड़ी में अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा बेंगलुरु चैप्टर से शिवानंद बिलारे। RMBN शिवानंद बिलारे को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा।
इसी कड़ी में नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगा रवि कुमार आर फ्रॉम बेंगलुरु. डू वी हैव रवि कुमार? ही इज नॉट हियर. ओके. एस सुंदरम. डू वी हैव एस सुंदरम विथ अस? यस, एस सुंदरम. एस सुंदरम सर इज फ्रॉम त्रिपुर. सर आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर हमारे इस कॉन्क्लेव में. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. His classification is multiple products marketing and his company name is Wenmart Kalaivani Traders, deals in multiple products marketing. Thank you so much S. Sundaram sir for being with us. Next इसी कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा Mr. Sampath Kumar. Do we have Sampath Kumar with us? Sampath sir please आइए. RMB and Sampath Kumar is here with us. He's from Bangalore. Classification is business insurance. His company name is Classic Insurance and he deals in risk. Dada is from RMB Bangalore and her classification is electrical supplies and her company name is Namo Electricals and she deals in wires, switch gear and MCB fence etc. Thank you so much Shikha and welcome to Jaipur. इनकी क्लासिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आप नोट कर रहे हैं. एंड मिस्टर रवि कुमार आर. रवि सर प्लीज आप आइए स्टेज पर. RMB and Ravi Kumar R from Bangalore. Classification is life insurance and his company name is Ravi Kumar Wealth Protector. आप LIC of India के लिए काम करते हैं. Top insurance advisor in the country, corporate club member, TOT MDRT member USA. Thank you so much Ravi sir. Please be seated. Take your seat. Thank you so much Neeraj sir. Thank you so much. So आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम आगे बढ़ेंगे एंड इसी कड़ी में मैं अब जो हमारे नेक्स्ट स्पीच के लिए यहां पर इनवाइट करना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सेक्रेटरी RMB फेलोशिप के मिस्टर राजामोहन धंदापानी. RMBN राजामोहन धंदापानी को मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फॉर हिज स्पीच, वेलकम स्पीच और वॉट एवर ही थिंक अबाउट दिस कॉन्क्लेव. मिस्टर राजामोहन. Good morning, everyone here. Distinguished Rotarians, family members, sponsors, fellowship. I request everyone's cooperation in this regard. So, now, one of the negative points that most of them tell is that I am not getting business immediately. Things do not take place immediately. You have to be present in the game for a longer period of time to be recognized, to be acknowledged as to who you are. Give it a try, give it some time. You're going to succeed, you're going to make it big. I'm going to travel with you for the next 1.5 days. I'm absolutely excited about this. Thank you so much. Welcome all of you. Thank you so much Rajamohan sir and I hope you're going to have a great learning from Rajamohan sir because tomorrow morning he is going to have a fantastic session with full of energy and it is all about business and business. He will tell you how to succeed in your business. It is going to be a very important session. Thank you so much Rajamohan sir once again and now I request फर्स्ट टू वेलकम. मैं गेस्ट को बुलाऊं उससे पहले यहाँ पर वेलकम करने के लिए मैं RMB जयपुर से अशोक जैन कोटलर सर को इनवाइट करना चाहूँगा. अशोक जैन कोटलर सर प्लीज़ आप स्टेज के पास आ जाएं ताकि हम वेलकम कर सकें. और हमारे अगले गेस्ट का मैं रिक्वेस्ट करूँगा. हमारी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेलकम पिक्चर सुरेश अग्रवाल सर की हमने बनाई है जो कि हम LED स्क्रीन पर यहाँ पर प्ले करेंगे. दैट वेलकम वी वुड लाइक टू वेलकम सुरेश अग्रवाल सर ऑन स्टेज. सुरेश अग्रवाल सर फ्रॉम FORTI. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अब यहाँ स्टेज पर पधारें. लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. मैं रिक्वेस्ट करूँगा साफा लेकर आएँ और सुरेश अग्रवाल सर को यहाँ पर साफा पहनाने का कष्ट करें. अशोक जैन सर ऑन बिहाफ ऑफ RMB जयपुर यहाँ पर इनका वेलकम करते हुए. सर बहुत बहुत स्वागत आपका और ये साफ़ा हमारी शान है
एंड हम लोग बड़े प्यार से इसे पहनाते हैं राजस्थान में, तो आज हमारे गेस्ट को भी हमें पहना रहे हैं। थैंक यू सो मच। सुरेश सर आप स्टेज पे रुकिए हमारे साथ में। अशोक सर थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक योर सीट। इसी कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कल्पना मैम से। कल्पना मैम प्लीज़ कम ऑन स्टेज टू डू दी ऑनर। आप प्लीज़ एक बार स्टेज पर आइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एंड आई रिक्वेस्ट ललिता कुचल मैम एज अ गेस्ट हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें एक दुपट्टा पहनाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए प्लीज़ आप स्टेज पर पधारें। मीनवाइल आई रिक्वेस्ट अरविंद जी आप प्लीज़ तैयार रहें, मैं आपको स्टेज पर बुलाऊंगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि ललिता मैम को आप दुपट्टा पहनाकर उनका यहाँ पर स्वागत करें ऑन बिहाफ ऑफ RMB फैमिली। थैंक यू सो मच कल्पना मैम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम ललिता मैम। कल्पना मैम आप प्लीज अपनी सीट लें, थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ललिता मैम एंड सुरेश सर प्लीज़ आप स्टेज पर यहाँ पर विराजमान हो। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो RMB जयपुर के चेयर है मिस्टर अरविंद बत्रा, वो यहाँ स्टेज पर आएँ, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक दो कोर्डलेस माइक और हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराएं स्टेज के ऊपर, ताकि हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉक यहाँ पर कर सकें हमारे इन मेंबर से। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब एक सेशन फोल्डर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है उसको यहाँ पर हम सेट करेंगे। अरविंद जी ये माइक आप, और एक माइक और दे देना। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही हम लेते हैं, हालांकि जो होम मेकर्स होती हैं हमारी वो भी एंटरप्रेन्योर्स से बड़ी होती हैं, लेकिन हमारा ये टारगेट है बिकॉज ये एक व्यापारियों का संगठन है, तो इसमें हमने महिला व्यापारियों को ही लिया है, जो उद्यमी हैं उनको ही जोड़ा है अपने साथ में। और हमारा प्रयास ये रहता है मिलके हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के व्यापार को आगे बढ़ाएं, और किस तरह से नई सोच के साथ सरकार के साथ जो भी उनकी नई नीतियाँ आती हैं उनके साथ हाथ से हाथ मिला के हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ें। जी थैंक यू। बहुत ही अच्छी सोच आपकी महिलाओं के लिए। सर जो सभी जानना चाहते हैं और एक मेरे मन में भी है कि अभी आप एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं सर कीनिया में, राइट सर? तो प्लीज़ लेट अस नो व्हाट इज़ दैट इवेंट, एंड इफ़ यू कैन मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर फ्रॉम साउथ, सो प्लीज़ एनलाइटन दैट। एक एग्जीबिशन हम कीनिया नैरोबी के अंदर प्लान कर रहे हैं, प्लान नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। 5 से 7 जुलाई को नैरोबी में वो एग्जीबिशन होगी, और तकरीबन 150 से 200 एग्जीबिटर हम ऑल ओवर इंडिया से लेके उसमें जा रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी राजस्थानी है कि हम कैसे अपने बिजनेस को और इम्प्रूवमेंट करें। आज की तारीख में जैसे हम देख भी रहे हैं कि आपके यहाँ भी ग्लोबल लोग हैं, तो बिजनेस अब गांव और शहरों से निकल के ग्लोबल होता जा रहा है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होगा वैसे वैसे हम बिजनेस को और इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। और बिजनेस के सबसे ज़्यादा स्कोप अगर आज की तारीख में कहीं है तो वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में लोग जाने से डरते भी हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं कि क्या माहौल है क्या है। तो हमारा इरादा ये है कि हम अफ्रीका में एक एग्जीबिशन करके हम लोगों के व्यापार और उद्योग को कैसे एंड हाउ my question is I can think relate to all, because if you are not doing any business related to export, how will you help us to find their business? बिजनेस के हर एक बिजनेस के वहाँ स्कोप है। आप कोई भी बिजनेस ले लें और किसी भी लेवल का, किसी का कम हो सकता है किसी का ज़्यादा, जो इंडिया में स्कोप है उन हर एक बिजनेस का स्कोप अफ्रीका में है। रहा बात कि हम उसमें वहाँ पे क्या क्या बिजनेस हमारे को करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप जो जिस बिजनेस में हैं उसी बिजनेस उसी प्रोफेशन का भी वहाँ बहुत स्कोप है। कोई भी प्रोफेशन लेके जाए और हर तरह का, और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ रह के बिजनेस करें। मेरा अपना अच्छा बिजनेस है, मेरा बेटा वहाँ बिजनेस संभालता है और तकरीबन 3 महीने में एक बार जाता है और स्मूथली सारा बिजनेस चलता है। पिछले कोरोना के बाद से मैं किसी भी महीने 70% से ज़्यादा माल सप्लाई नहीं कर पाया। इवन इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस एक बार स्टार्ट होने के बाद स्मूथली है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? अभी जो आप एग्जीबिशन लगा रहे हो सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी का ऐसा बिजनेस नहीं है कि वो आज एक्सपोर्ट कर पाए, तो क्या वो बिजनेस ढूंढने में भी आप इस एग्जीबिशन में हेल्प करेंगे उनकी? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वहाँ तकरीबन हमारे पास मिनिमम 10,000 विजिटर आने वाले हैं
और ये टोटली B2B एग्जीबिशन है। तो B2B एग्जीबिशन है तो आप वहाँ पे हमने कुछ यहाँ से स्टॉल्स ऐसी रखी है जहाँ पे लोग अपने जो प्रोफेशनल या बिजनेस को देख रहे हैं वो बिजनेस भी उन छोटी स्टॉल के माध्यम से अपना फाइंड कर सकते हैं। अब मेरा ललिता जी आपसे क्वेश्चन है कि इस एग्जीबिशन में महिलाओं की भागीदारी है? बिल्कुल है, महिलाएं कैसे पीछे रह सकती हैं अरविंद जी। तो महिलाएं भी वहाँ पे स्टॉल्स लगा रही हैं, तो बिल्कुल न्यू बिजनेस एक्सपेंशन जैसे अभी आपने सवाल किया था कि आर देयर एनी चांसेस फॉर न्यू बिजनेस, तो जैसे आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, फाइन, तो मैंने भी अभी लगा कि भाई एज एन ऑल्दो आर्किटेक्चर का वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन लगा कुछ नया क्या कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग इनटू, आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस इन अ कॉस्मेटिक रेंज। तो अभी क्रीम का जैसे हम लोग सनस्क्रीन लोशन बना के हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे। इट्स अ न्यू बिजनेस फॉर मी, बट देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप इन अफ्रीका फॉर दिस कॉस्मेटिक रेंज एंड ऑल। सो जैसा आपने कहा कि नया कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 40 आपका इसमें आप सभी जो भी, अगर आपको लगता है कि क्या अफ्रीका में इस चीज़ का स्कोप है जो बिजनेस आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो बिल्कुल है। नई उम्मीद, नई उसके साथ हम लोग हर जगह ट्राई कर सकते हैं। 40 आपका इसमें हर चीज़ में साथ देगा, आपको वहाँ बिजनेस दिलाने में। और किस तरीके से आप अपना कोई नया प्रोडक्ट प्लान भी कर रहे हैं तो उसको कैसे वहाँ पे आप आके ले जा सकते हैं, तो इसके लिए इट्स एन ओपन मार्केट फॉर एवरीवन, दोज हु वांट टू ट्राई फॉर अ न्यू बिजनेस और ऑलरेडी दे आर इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, दे कैन गो एंड ट्राई फॉर द दिस 40 एग्जीबिशन, बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन आवर 40 एग्जीबिशन पार्ट। हेलो सर, अब मेन क्वेश्चन पे हम बात पे आते हैं कि वहाँ पे स्टॉल लगाने की कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट पहले आप बता दें, फिर मैं उसको बताता हूँ। टोटल कॉस्ट उस पर 5 लाख रुपए की, जिसमें यहाँ से दिल्ली तक का या कोई कहीं से भी टिकट बनवाना चाहे वहाँ से आना जाना, वहाँ पे स्टे, आपका लॉजिंग और बोर्डिंग सारा उसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको तो सिर्फ सपोज करो दिल्ली से अगर टिकट है या मद्रास से है या बम्बई से है, वहाँ से आना जाने तक की टोटली आपको कोई चार्जेस नहीं है। तो आप 5 लाख आपने बताया, राइट? तो उसमें कुछ सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से है जी? उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए की सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी 1 लाख रुपए की सब्सिडी है। अगर आप में से ज़्यादातर मेरे को जो सदस्य यहाँ पे हैं या व्यापारी हैं वो राजस्थान से बाहर के हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट उन्हीं को सब्सिडी देगी जो राजस्थान में बिजनेस कर रहे हैं। और अगर वो राजस्थान से बाहर के हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। 1 लाख रुपए की 40 की तरफ से 40 मेंबर को डिस्काउंट है। जैसे आपने मेरे से बातचीत की थी, आपकी मेरी बात हुई, तो हम 40 रोटियन बिजनेस के लिए भी हम 1 लाख रुपए का इसमें डिस्काउंट रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाउ यू वांट टू से दैट वी हैव एसोसिएशन विद 40. If 40 RMBN wants to have a stall in Kenya, with the association of 40, 1 lakh rupees subsidy from the central government, and they will also allow 1 lakh subsidy from the 40 to us. So now we have association with 40 and RMB. Right. Yes. Thank you so much, sir. Clap for it. थैंक यू। सर इसका डेट दोबारा से बता दें आप एक बार। 5 से 7 जुलाई का है। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 30 मई। 30 मई। और उसमें आपको क्या क्या चीज़ हमें देनी पड़ती है? अगर किसी को वहाँ एग्जीबिशन में जाना है तो किससे कनेक्ट करें? या तो मेरे से कनेक्ट कर लें, यहाँ से हम आपसे कनेक्ट करवा दें। मैं आपको एक फ्लावर मैसेज दे दूंगा, उसके अंदर हमारा टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है। या मैं ये चाहूँगा कि आप अरविंद जी से ही कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति का बिजनेसमैन का इंटरेस्ट है कि हम नए बिजनेस को एक्सप्लोर करें, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, नए एक्सपोर्ट के वेन्यू को देखें, तो आप अरविंद जी से ही संपर्क करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अरविंद जी वहाँ पे 40 के ऑफिस में संपर्क करवा देंगे आपका। और मेरा ये कहना है कि अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है। अपन ने कोरोना में ये देखा है कि अभी यूरोप, यूएस, अमेरिका सब में बिजनेस 20% डाउन हुआ है। कुछ यूक्रेन रशिया की लड़ाई की वजह से भी फ़र्क पड़ा है, बट अफ्रीका एक मार्केट ऐसा है जो कोरोना के बाद 50% ग्रो हुआ है। तो अफ्रीका बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। मार्जिन वाइज अगर हम देखें बिजनेस तो 4-4-4 बेटर है। मिनिमम 30% प्रॉफिट से काम स्टार्ट होता है। अब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डील करता है कि कौन से प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, तो मार्जिन 100% तक भी जाते हैं। अच्छा, वन मेजर क्वेश्चन सर, दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपो?
Yes, this is our first international expo. And you are planning to do every years? Yes, 100%. हम साल में 2 एग्जीबिशन करने का नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, एक दुबई में और एक अफ्रीका में। So we are always with you, RMB and 40? 100%, 100%. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Any question from your side? Any question? Most welcome, sir. Hello. 40. Your wordings are very good, sir. The right talk. First you learn, then you remind. I had seen your wordings. It's good. And then I am from Tirupur, Sundaram. Actually, I am doing Rotarians to Rotarians marketing. Actually, all the products from Rotarians we are dealing. Ma'am, in women's wing, how you can help? Actually, we are all in business. Actually, I am from South, from Tirupur. Actually, how you can help our people from here in Jaipur? That's the thing. Especially women from there? Yeah, women Rotaries are there. Women RMBs are there. Everywhere you are there, ma'am. In all. Yeah, we will be there anytime, anywhere we are there for you. And you are most welcome if anybody who wants to be a part of a 40 exhibition in Kenya or if your women, they want to be a part of a 40 women wing, what we can do, we can make a new women wing there for your all women's, and we will be there for their business help. And if they want to start any kind of business, maybe it is startup or a very small business they want to plan from they want to there from home, their home, then we are there. We are ready to help them, and we will give them the market as well as in the south and in our Rajasthan also. Thank you, ma'am. We will start a startup in Yeah, sure, definitely. in south as a startup. A woman wing of 40. Yeah, definitely. Now we gonna plan. भाई ये तो बहुत अच्छा रहा हम सबके लिए. Thank you so much कि आप 40 women wing South में भी हम लोग start करेंगे very soon. And thank you so much for your words, sir. Thank you. I like to know that on the platform of Rajasthan, हम ये जो एग्जीबिशन केन्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना, वापस लेकर उन सब चीज़ों में 40s हमको कैसे हेल्प करेगी. और जैसे आपने कहा एक वहाँ जाने का टिकट फ्री रहेगा, रहना बोर्डिंग भी रहेगा, लेकिन अगर किसी कंपनी से 2 जने जाते हैं, इट्स पॉसिबल और इट्स गिवन बाय ओनली द 1 पर्सन? यस, नहीं, इसमें जाने के लिए आप 1, 2, 3 कितने भी जा सकते हैं. इस प्राइस में एक इंक्लूड है एक्स्ट्रा प्राइस में. आप किसी दूसरी कंट्री में भी जाना चाह रहे हैं, टाइमिंग की टिकट की आपसे पूछ ली जाएगी. वीज़ा वगैरह जो हमारी टीम कर रही है पूरी की पूरी ट्रैवल की टीम, वो आपको बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करा देगी किसी तरह की. हर कंट्री में ऐसा होता है. आप जैसे मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और मैं अगर ज्वेलरी वहाँ पे लेके जाता हूँ शो में, तो वो गाइडलाइन भी चाहिए कि वहाँ पे कि वो सारी गाइडलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी. आप कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो आपका एक लेटर यहाँ से जाएगा. हमारी एक टीम वहाँ पे है जिसने ऑलरेडी वहाँ पे 5 करोड़ रुपए की गारंटी गवर्नमेंट को दी हुई है. जो आप लेंगे वो राजस्थान में आपको जहाँ से भी जा रहे हैं उस एयरपोर्ट पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा. उसी डिक्लेरेशन के बिहाफ पे केनिया एयरपोर्ट पे डिक्लेरेशन होगा. जब वापस आएंगे तो वो डिक्लेरेशन वापस उसको दिखाना पड़ेगा कि ये ज्वेलरी हम वापस ले आए. कोई भी चीज़ आपकी वहाँ पे शॉर्ट हो गई है, सेल कर दी है, तो उसका टैक्स वहाँ आपको भर के और फिर वापस आना होगा. किसी तरह की प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इस एग्जीबिशन में जो क्वेश्चंस, केनिया में एक एसोसिएशन है हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया, उसके अंडर में 127 केनिया के पूरे कंट्री की एसोसिएशन उसके अंडर में आती है. वो हमारे को सपोर्ट कर रही है. राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केनिया हमारे को इसमें सहयोग कर रही है. 2 एसोसिएशन अपने को सहयोग कर रही है. थैंक यू सो मच सर. कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. आप दोनों आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने हमको मिलाया इतने अच्छे लोगों से. एंड स्पेशली जयपुर के बाहर के लोगों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. एंड बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके. एंड लेट्स RMBN and 40s be together. यस, थैंक यू सो मच. Thank थैंक यू. जोरदार तालियां आप दोनों के लिए. थैंक यू सो मच सर. Thank you.
मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले अरविंद बत्रा जी से कि आप सुरेश अग्रवाल जी को यहाँ पर मेमेंटो भेंट करके उन्हें थैंक यू कहें. एंड मीनवाइल आई रिक्वेस्ट Sujata Gururaj ma'am, please come on stage to do the honor to welcome our another guest on stage. So first I request Arvind Batra ji कि आप Mr. Suresh Agrawal ji President FORTI को यहाँ पर thank you कहें. And next I request Sujata ma'am to come up on stage and do the honor. Lalita ma'am हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, तो I request Sujata ma'am आप Lalita ma'am को यहाँ पर hand over करें for this beautiful, knowledgeable session, beautiful, knowledgeable talk about this amazing FORTI association, FORTI team in Bangalore. His classification is anti-skid entrance mats and his company name is Toshit Services Private Limited. He deals in all types of entrance and safety mattings. Thank you so much, Manjunathan sir, for being with us. Thank you so much. Thank you so much. Well, इसी कड़ी में अगला नाम मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब हमारे बैंगलोर चैप्टर के वो चेयर भी हैं, चीफ भी हैं, और हमारे इंटरनेशनल जो बॉडी है उसके भी वो चीफ है. सो बीइंग अ बैंगलोर कैप्टन, I request Sachin Gururaj sir to come up on stage. We would like to welcome you on stage. Thank you so much, Sachin Gururaj sir. He's from Bangalore and he's our international chair for RMB fellowship. But definitely sir ka session hoga, but before that we would like to introduce him. His classification is Animal Health Software and Food Manufacturing. Trinian Technologies, Hasiru Food Private Limited, दो companies आप run करते हैं, deals in animal health and software and food manufacturing. Thank you so much. And once again, I would like to thank our sponsors. मैं Dhandapani and Company, Arvind Eternal Hospital, Maheshwari Garments, GBPS 2024, Meherwal Opticals, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. Next, I request Naresh Kumar Ragi from Hyderabad. नरेश कुमार रागी फ्रॉम हैदराबाद. आई रिक्वेस्ट 20 नंबर तक आप लोग रेडी रहें ताकि हम आपको यहां पर इनवाइट कर सकें. नरेश कुमार रागी फ्रॉम हैदराबाद. नंबर 14. Can we wait, Naresh sir? Please wait for a moment. Yes, he is here. I would like to read out your introduction once again. RMB and Naresh Kumar Ragi from Hyderabad. His classification is Web Development and Digital Marketing. His company name is Glancer Solution and he deals in branding, software development, digital marketing. Thank you so much. Thank you so much, Naresh Kumar sir. इसी कड़ी में next मैं invite करना चाहूँगा Satish Rajmane from Goa. Satish Rajmane sir, is he here with us? Satish Rajmane? Oh, he's not here. Okay. The next one is, I request A.G. Satyan. A.G. Satyan, sir, please come on stage. A.G. Satyan, sir. He's from RMB Madras. His classification is International Design Engineering Consultant for Oil and Gas and Industrial Projects. His company name is AGS Consulting Engineers and Project Management. And he deals in design and detail engineering consultant. Welcome to Jaipur, Satyan sir, and we hope आप enjoy करें. Thank you so much for being with us. Next, I like to call on stage Nurveen from Mauritius. I request Nurveen, please come on stage. We would like to welcome you, and we would like to read out your classification and your introduction. RMB and Nurveen Rati from Mauritius. Classification is Executive Creative Director and Brand Strategist. His company name is Crayon Color Advertising Limited and he deals in advertising, branding and marketing. Welcome to Jaipur once again, Nurveen. Thank you so much for being with us. Well, इसी कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा Uma G. Reddy. Uma Reddy ma'am, please come on stage. Uma ma'am is from Bangalore and his classification is Recruitment Services. So ma'am, thank you so much for being with us. Her company name is Hiring Studios and she deals in IT, manufacturing, hospitals, top and mid-level hiring projects hiring. Welcome to Jaipur, Uma ma'am. Thank you so much. Next, I request Nishant Mehta. Nishant Mehta from Mumbai. Do we have Nishant sir with us?
Nishant sir is not here. Okay. Well, इसी कड़ी में I request Hemang Jangla. Hemang sir. Hemang sir, please come on stage. He is from Mumbai. जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए यहाँ पर. And he is RMB and Hemang Jangla from Mumbai. Classification is IRDA licensed insurance broker. Havemore Insurance Brokers Private Limited इनकी कंपनी का नाम है and he deals in insurance. And welcome to Jaipur. Hemang sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है. And once again I request these are the introduction slides जहाँ पर हम classification, company और किन चीज़ों में हमारे ये RMBNs डील करते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. Next I request पंकिल पढ़ारिया, पंकिल from राजकोट. पंकिल भाई તમારું बहुत बहुत स्वागत है. Please come on stage. Pankil, RMBN Pankil Padharia from Rajkot. Classification is digital marketing. He deals in digital marketing. Vispan Solutions Private Limited. Vispan Solutions Private Limited ये इनकी कंपनी का नाम है और आप राजकोट से हमारे बीच में यहाँ पर हैं. राजकोट के आप मेंबर हैं. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर. इसी कड़ी में अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अब राजकोट से ही निशांत वोरा सर को इनवाइट करना चाहूंगा. निशांत वोरा सर राजकोट से हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं. ही इज नॉट हेयर. निशांत वोरा इज नॉट हेयर. डू वी हैव जतिन ढोलकिया सर? जतिन ढोलकिया. निशांत वोरा इज नॉट हेयर. जतिन ढोलकिया. नेक्स्ट नेम इज जतिन ढोलकिया. नंबर 23. Jatin Dwarkadas Dholakia from Rajkot. RMBN Jatin Dwarkadas Dholakia. Classification is insurance, which is life and non-life insurance both. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. Company Global Era Insurance Services deals in factory and business insurance. आपका बहुत बहुत स्वागत. There are few members from Rajkot. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जतिन ढोलकिया तो हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं. Next is राज डाबालिया. राज आप भी प्लीज स्टेज पर आए एंड आप सभी जोरदार तालियों से इनका वेलकम करेंगे. राज डाबालिया हमारे बीच में यहाँ पर राजकोट से मौजूद है. तो नेक्स्ट इज राज डाबालिया. कैन वी हैव द स्लाइड फॉर द नेक्स्ट मेंबर? राज डाबालिया सर, वेलकम टू जयपुर. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्क्लेव, which is the first ever conclave of Rotary means business Jaipur. And Raj, एक second. RMBN Raj Dhabalia from Rajkot. Classification is branding and graphic agency. Smith Cards इनकी कंपनी का नेम है and it deals in graphic designing, NFC cards, brochure, catalog, exhibition design, social media content creation. Well done. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सुरेश सर, आपका इतना समय लिया. एक बार जोरदार तालियां हम सुरेश सर के लिए यहाँ पर देना चाहेंगे. ऑल राइट. एक और चीज मैं यहाँ पर आप सभी को मेंशन करना चाहूंगा. दिस इज लाइव ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब. दिस इंटायर प्रोग्राम इज हैपनिंग लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. तो यूट्यूब पे सिटी लाइव नाम से जो चैनल है उसको आप सर्च कर सकते हैं. हमने ग्रुप में आई गेस समवन इज शेयरिंग द लिंक. इफ समबडी हैज प्लीज शेयर इन द ग्रुप. आप अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को भेज सकें और सभी लोग उसको देख सकते हैं. फेसबुक पर आरएमबी फेलोशिप के पेज के ऊपर ये लाइव चल रहा है, तो आप इसको वहां पर देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है. Yes, with their local chapter. Please share with their local chapter. People who are not present here, they should also see the program. Not physically, virtually. Let them enjoy. Okay, so. All right, मैं यहाँ पर एक बार फिर से तकल्लुफ देना चाहूँगा ललिता मैम को, because ललिता मैम, we got a very beautiful gift for you. और हम चाहते हैं कि हम आपको स्टेज पर बुलाकर वो गिफ्ट दें. और अरविनो जो हमारे एक पार्टनर हैं, स्पॉन्सर हैं, उनके सीईओ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आशीष पारिक सर. तो आशीष पारिक सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ कम ऑन स्टेज टू डू दी ऑनर. और
ललिता मैम को आप ये जो गिफ्ट हैम्पर है, ज्वेलरी गिफ्ट हैम्पर, ज्वेलरी डिजाइनर ज्वेलरी है अरविंदो की तरफ से, वो यहाँ पर हैंड ओवर करेंगे. एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्स आई कैन सी एंड ब्यूटीफुल कैटलॉग आई गेस. सो आशीष पारेख जी जो सीईओ हैं अरविंदो के, वो हैंड ओवर करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस ब्यूटीफुल गेस्चर. लेडीज एंड जेंटलमैन, thank you. Such a beautiful box and beautiful designer jewelry. अरविंदो की जो ज्वेलरी डिजाइन्स हैं वो बहुत फेमस है, नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है. यू कैन चेक आउट ऑनलाइन and you can connect with the Arvindo team who are present here directly. Thank you. All right, moving further, now I request for the next speech, but before that, I request once again ऑल राइट. सो हम नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे प्रेजेंटर हैं जिनको हम यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं उनकी स्पीच के लिए, उससे पहले हम चाहेंगे कि उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है ताकि हम उनके बारे में डिटेल से आपको बता सकें. तो वो चीज़ मैं आपको बताऊं, मतलब वो चीज़ हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लें. मीनवाइल उनको हम थोड़ा सा तैयार भी करें कि भाई वो यहाँ पर आने के लिए तैयार हों. और यहाँ पर जितने भी अभी RMB मेंबर्स मौजूद है फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, लेट मी टेल यू देयर आर गोइंग. अगर रेडी हैं हम हमारे वीडियो के साथ में तो कैन वी गो अहेड. वी आर ट्राइंग टू प्ले दिस वीडियो ताकि हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा और बेहतर यहाँ पर कर सकें. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैव पेशेंस एंड बी विद अस इन दिस सेरेमनी. देयर आर सो मेनी अदर things like I mean different chapters जिसमें अभी तक हम जिनके इंट्रोडक्शन यहाँ पर लगभग कर चुके हैं. अगर कोई मिस आउट होगा तो वो आगे होगा डेफिनेटली. सो बेंगलुरु, त्रिपुर, हैदराबाद, गोवा, मद्रास, मुंबई में निशांत सर इज हियर नाउ. निशांत सर विल कॉल यू, वी कॉल्ड यू बट यू वर नॉट देयर, बट वी विल कॉल यू अगेन जब भी हम इंट्रोडक्शन स्लाइड पर भी जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेंबर्स फ्रॉम इरोड, यूनाइटेड, कोयम्बटूर, उदयपुर, मदुराई, पुणे एंड मॉरिशस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम जयपुर ऑल्सो. सो जयपुर वाले जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हम सबसे लास्ट में यहाँ पर इन्वाइट करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर हमारे जो गेस्ट हैं उनको एक एक करके इन्वाइट करने वाले हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम ऑल्सो वेटिंग लाइक यू कि हमारा वीडियो रेडी हो तो हम यहाँ पर प्ले करें. बट मीनवाइल जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ही देर में इनवाइट करेंगे. All right, he is on screen now finally. So can we play Mr. this Sachin video? Gururaj, a successful entrepreneur with about 24 years of business and IT exposure. His Rotary Association is now more than 14 years old and has held many positions in Rotary with a special interest in healthcare related projects in the club while ensuring 100+ pediatric heart surgeries in a club where he was a member earlier and thousands of vials of blood donations continuously. He is with Rotary Bangalore Oasis. He and his wife Sujata are both Paul Harris Fellows. Sachin's RMB association started before RMB was even approved by Rotary International. He has served the steering committee along with Mark, who spearheaded RMB to heights, what it is today, and has helped work on the initial bylaws of Rotary Means Business International. Since then, he has been serving the board of Rotary Means Business International. He is very passionate about RMB and has helped start and has mentored a few chapters, while his wish is to start a chapter in every Rotary International district. Sachin has just taken over as the chair of Rotary Means Business Fellowship and has multiple plans. He has a couple of business including being a founder and investor at a private limited food industry manufacturing idli
and dosa batter, the first company in Bangalore to manufacture millet-based dosa batter and a proprietor of a software business, Trinian Technologies, with major business in eastern part of the world. He has extensively traveled to multiple countries in his business and has special recognition for a HRMS product developed under his guidance, which is now the fastest selling HRMS product in the country. He has an interest in wildlife photography, traveling, acting, directing theatre dramas, swimming, and reading books. Sachin has multiple state level awards in acting. He is happily married with Sujata, who is also a Rotarian and has two sons, Samit, an IAS aspirant, and Sujan, who holds a recognition from India Book of Records for speaking, spelling English words, and sentence backwards. Sachin believes there is certainly a beginning to every good and an end to all bad. Thank you so much. Thank you so much. Now I request Sachin Gururaj sir to on stage. Chair RMB Fellowship. Sir, please come and we would like to hear your words for all the fellow RMBians. Over to you, sir. Thank you so much, RJ Sachin. We have two Sachins here, you know. Many a times people get confused, you know. We were talking all these days on telephone for this, and we also had some conference calls where, you know, somebody says, hey Sachin, this is what we are planning to do. We don't know whether he is addressing me or this gentleman. Anyway, warm welcome to all of you here. Actually, I would like to switch over to Hindi because last time when I was here in August 2022, I promised, I know very little Hindi, you know. I promised people in Jaipur that I'm going to talk in Hindi next time when I come here. The credit goes to this gentleman, Arvind Batra. पिछली बार मैं जब इधर आया था अगस्त 222 में मैंने कहा था कि मैं अगले बार जब आऊँगा हिंदी में बात करूँगा तो अरविंद बात्रा तब से 222 से आज तक वो जब भी मुझे फ़ोन करता है मुझे हिंदी में ही बात करते हैं तो अब तो मैं हिंदी में थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ मगर उतना अच्छा तो नहीं मैं नॉर्थ इंडिया में जीत सकता हूँ Thank you so much, Arvind, for having taught me Hindi. Last time I actually mentioned that I have 52 friends who can teach me Hindi, and today I am able to speak to this extent. We have Rajamohan, who is going to talk a lot about network and also networking activities. We have Mark, who is going to talk about RMB altogether. We intentionally wanted, you know, to reduce addressing the team so that we give lot more priority for the networking event. But one thing I want to let you all know that the leadership team is always with everybody, all the chapters. We have a committed team. This gentleman flies all the way from California to Jaipur. That is the kind of commitment. This gentleman is a selfless person. He has done a lot to RMB. And Kalpana, the lady was in Sweden. I gave her a call on WhatsApp and I said, hey, we have a program. She says, Sachin, I'm in Sweden. I said, no, nothing doing. You have to be here. She says, I will change my plan. And she changed her tickets. She came here early back. Why I'm telling you this is the kind of commitment that the leadership team has always shown, and it will continue. All the chapters will get all the kind of support to make sure that every chapter will grow to newer heights. We have multiple plans in RMB. We are going to do a lot, and I'm sure you're all with us to take RMB to newer heights. Thank you so much. We really want to cut short this addressing so that we have more time for networking. Thank you so much. Have a pleasant conclave. Thank you so much, Sachin sir. Thanks again for your words and motivation to all of us.
ऑल राइट सचिन सर, आप बहुत जल्दी नीचे उतर गए, मैं आपको रोकना चाह रहा था थोड़ी देर स्टेज पर। सिंस यू आर लविंग हिंदी, सो मैं बहुत खुश हूं आपसे हिंदी में बात करके, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ। You can understand, but you. I was able to understand even before, but then I was not very fluent. Even now I'm not very fluent, but I can talk much better than what. All right. So I request our operating team, audio visual जो operate कर रहे हैं, राधिका, there are introduction slides again, जो हम एक बार फिर से introduction slide पर यहाँ पर jump करने वाले हैं, और मैं एक एक करके जो हमारे आगे के members हैं उनको अब यहाँ पर इनवाइट करूंगा। सचिन सर, मैंने आपको इसीलिए रोका है कि आगे जो हम RMBNs हैं उनका यहाँ पर इंट्रोडक्शन करें और आप उनको यहाँ पर वेलकम करने वाले हैं। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग टू इरोड यूनाइटेड से वी हैव विद अस शिवा कुमार के। डू वी हैव विद अस शिवा कुमार के? प्लीज आप स्टेज पर आएं। अरे भैया यार, ये ऑपरेटर है ना अपना, ये इसको समझाओ यार, ये पिछले बार भी। Thank you so much, RMBN K Shiva Kumar, RMB Erode United. Classification is Industrial and Decorative Lights. आपका बहुत बहुत वेलकम। लाइट्स इनकी कंपनी का नाम है, एंड ही डील्स इन chandeliers, panel LED lights, fans, UPS, batteries. We welcome you sir. Thank you so much for being with us in Jaipur, RMBN K Shiva Kumar. इसी कड़ी में नेक्स्ट नेम है रमेश बाबू जे। I request रमेश बाबू सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। रमेश बाबू RMB Erode United से आप यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। His classification is Rain Water Harvesting Management Systems. His company name is RPV Enterprises and he deals in rain water harvesting systems. We are telling these details, classification and deals in because आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, आपको थोड़ा इजी रहे, इसके लिए हम आपको यहाँ पर इस बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे के कैलासापति, प्लीज कम ऑन स्टेज। ही इज फ्रॉम इरोड यूनाइटेड, RMBN K.E. Kailasapati Erode United. Classification is authorized dealer for Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner. आप डील करते हैं हेवी इंडस्ट्रीज एयर कंडीशनर्स के अंदर। आपकी कंपनी का नाम है A-Win Aircon. आपका बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन जयपुर। इसी कड़ी में नेक्स्ट वी हैव विद अस के मुथुसामी। आई रिक्वेस्ट प्लीज कम ऑन स्टेज। के मुथुसामी के बाद में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप आगे के जो नाम हैं वो तैयार रहें। फिलहाल हमारे साथ में यहाँ पर के मुथुसामी हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। के मुथुसामी फ्रॉम इरोड यूनाइटेड। क्लासिफिकेशन इज इलेक्ट्रिकल एंड पाइप्स एंड हिज कंपनी नेम इज सिकार एंड कंपनी। ही डील्स इन इलेक्ट्रिकल एंड पाइप्स। देन नेक्स्ट नेम इज सुरेश कुमार एस is here with us from Erode United. Classification is manufacturer and exporter and his company name is Maritime Switchgears Private Limited. Deals in electrical panel board manufacturers of LV and MV panels. He is from Erode United, RMBN Suresh Kumar S. Next is Joseph B.A. Do we have Joseph? Yes. Joseph is from Coimbatore, right? Joseph sir, welcome to Jaipur, and he's from Coimbatore. Classification is leather furniture and home theater. His company name is CHPF and he deals in customized leather furniture and home theaters. Thank you so much. Yes sir. Oh, big congratulations. He started the registration drive of this conclave actually. Thank you so much. You are our Shri Ganesh ji. Thank you so much for this conclave. Next is Sudhakar VS from Coimbatore. Thank you so much for being with us. RMB Coimbatore से Sudhakar VS. Classification is engineering products and the company name is Anusuvarya Enterprises Private Limited. And deals in electric vehicles charging stations, which is very important now and which is the talk of the nation now. Thank you so much. इसी कड़ी में next I request Kaja Mohiddin, please come on stage with us.
नेक्स्ट इज काजा मोइदीन. RMB मद्रास से आप हैं. क्लासिफिकेशन इज रेडी मिक्स प्लास्टर एंड वाटर प्रूफिंग. वेलकम टू जयपुर. His company name is Unichem Industries and deals in plaster, tile, adhesive and waterproofing. Thank you so much, Moideen sir, for being with us. Thank you so much and welcome to Jaipur. And इसी कड़ी में सचिन सर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है. And मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो मतलब it was not planned. It is just happening actually. The next name I'm going to take is the secretary from your team only. So I request Rajamohan sir. This was not planned, this is just happening. So Rajamohan sir is also from Coimbatore. He is our secretary as well. And we would like to welcome you again for this introduction part. Can we have the slide of Rajamohan sir, introduction slide, the next one? As you know, Rajamohan sir से हम already यहाँ पर discuss कर चुके हैं. He has spoke his words already and he has told so many things, but he is going to tell so many things tomorrow morning as well, and he is around with us. So next slide जो है मैं request करना चाहूँगा एक बार. Yes, sir, stay with us. Rajamohan Dhandapani from Coimbatore. Classification is IT consultant. Company name is IPCOM, Computer Hardware and Google Partner में आप deal करते हैं. Thank you so much, Rajamohan sir, for being with us. Moving further to the Udaipur chapter now. Udaipur chapter को हम next यहाँ पर move कर रहे हैं, and I request Naveen Vaishnav, please come on stage. Naveen Vaishnav sir हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं. RMB and Naveen Vaishnav from Udaipur. Classification is he is a hotelier. Company name is Regal Hospitality and deals in hotel business. He is into hotel business and he is from Rajasthan only. So Sachin sir, now it's turn to Rajasthan people. Udaipur chapter is here with us with good numbers. Thank you so much for being with us, Naveen sir. The next name is Nishit Baldava. Nishit, I would request please come on stage. Nishit Baldava हमारे बीच यहाँ पर उदयपुर से मौजूद हैं next. So निशित का हम यहाँ पर वेलकम करेंगे. वेलकम टू जयपुर निशित. एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग अपने हाथ उठाकर तालियां थोड़ी थोड़ी सी बजाते रहेंगे तो हमारे सभी मेंबर्स को अच्छा लगेगा. निशित बलदवा, स्लाइड एक सेकंड रुकिए. वी वुड लाइक टू रीड आउट योर क्लासिफिकेशन एंड अबाउट यू. सो कैन वी हैव दैट स्लाइड प्लीज. निशित बलदवा. Should be number 34 or something like that. 34 or 35, please see. We are getting. Nishit, you are here. RMB Udaipur se classification. He is an architect and Baldava and associate his company name. Engineering, architecture and interiors. He is a very important person. He can be a very important person जो लोग भी plan कर रहे हैं अपने नए घर के लिए. Thank you so much निशित and thank you so much for being with us. इसी कड़ी में next मैं invite करना चाहूँगा रितु वैष्णव को. रितु मैम, please come on stage. From Udaipur, Ritu Vaishnav, we have Ritu Vaishnav with us. Classification is fashion jewelry and Noora by Ritu Vaishnav इनकी कंपनी का नाम है. And she's from all kind, Udaipur से है और deal करती है all kind of artificial jewelry में. Noora by Ritu Vaishnav इनका brand, इनकी कंपनी का नाम है and she's from Udaipur, RMB Udaipur. Next is Devendra Chaudhary. I request Devendra Chaudhary जी please stage पर आ जाए. उदयपुर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज बी रेडी. मैं आपको एक एक करके इनवाइट करूँगा. देवेंद्र चौधरी इज द नेक्स्ट वन. देवेंद्र चौधरी इज फ्रॉम उदयपुर. क्लासिफिकेशन इज फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. आपकी कंपनी का नाम है मोनाक नेटवर्क कैप लिमिटेड एंड यू डील्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एडीएन इक्विटी एडवाइजर. देवेंद्र जी अलग से मिलना पड़ेगा ये सब समझने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. Bhaskar D. Garg. The next name is Bhaskar D. Garg. Please come on stage. कल मैंने बहुत से लोगों को नारगढ़ में मैजिक दिखाया सर. एंड भास्कर उनमें से एक है. भास्कर इज फ्रॉम उदयपुर. क्लासिफिकेशन इज डिजिटल मार्केटिंग एंड ही डील्स इन डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल हैमर इनकी कंपनी का नाम है. वेलकम टू जयपुर भास्कर.
The next name is Mekla Bhomik. Mekla, please come on stage. She's from Udaipur and she deals in training and consulting services. Company name is Go Beauty with Brains Consulting Services, and she deals in image development and soft skills training. I'm sure कि कल शाम को आपकी मेखला से मुलाकात हुई होगी और आप सभी से एक्सचेंज कार्ड्स वगैरह आपने एक्सचेंज किए थे, नहीं किए तो अभी भी कर लीजिएगा. काफ़ी काम के मेखला मैम हमारे बीच यहाँ पर उदयपुर से मौजूद हैं. From Udaipur, last but not the least, Karan Garg. I request Karan sir to please come on stage. Udaipur chapter से. Classification is digital marketing and his company name is IFW Techno Creations Private Limited. Deals in digital marketing, website development and ERP solution. आपका बहुत बहुत welcome. Thank you so much Karan Garg. Sir, thank you Sachin sir. आपने इतनी मेहनत की, हमारा कहना माना, हमारा मन कर रहा है कि हम आपको राजस्थानी अंदाज में देखें. So Arvind sir, can you come up on stage? Arvind Batra, please come fast. You mentioned about live show on the Facebook and YouTube. If you had just told him, he would have taken care of. Sachin sir, please be with us. I request एक साफा लेकर आएं. हम सब सचिन गुरुराज सर को अब राजस्थानी अंदाज में देखना चाहते हैं. गोपाल सर आगे हमारे बीच में. गोपाल कृष्ण शर्मा सर, आप आइए. कहाँ थे आप सर? प्लीज कम है. I request Dr. Gopal Krishna Sharma from RMB Jaipur chapter to do the honor and आप सर स्टेज पर आके आप हमारे सचिन गुरुराज सर को थोड़ा राजस्थानी लुक दें. Can we have the thank? Actually सर गोपाल सर को इसलिए बुलाया, he is expert into that. साफा पहनाने में, क्योंकि बहुत अनुभव है सर इनको. एक सेकंड सर, आप यहाँ पर आइएगा. Rajamohan sir, I would like to call you on stage, and Sunil Suklecha sir, can we have you on stage for a while? Sunil Suklecha sir, please. Thank you Sachin sir, thank you GK sir. The next one is Rajamohan sir. Rajamohan sir, please be here with us. And Sunil Suklecha sir, हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा साफा पहनाते हैं, हमको मालूम चला है, तो आप राजामोहन सर को यहाँ पर राजस्थानी अंदाज, राजस्थानी लुक दें. All right, ladies and gentlemen, now it's time to call the person जिनको सुनने के लिए और जो आप सबसे इंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पर हम सब बेताब हैं. And we are very much excited, and he has traveled so much with us, and he is ready to give his inputs to you, to all the RMBNs. First, like Sachin sir's video, we would like to play a short introduction of this great personality. Can we have that AV please? And उसके बाद में हम इनको यहाँ पर invite करने वाले stage पर. Can we have that video please? Rotarian Mark Burchill and his wife Mel founded Advent Office Furniture in Santa Rosa, California, USA in 1983. Adhering to the 4-way test, they built a successful family business that grew to millions of US dollars revenue and employed 18 individuals. A decade ago, they downsized by selling the retail portion to a large regional corporation and then operating as a home-based business with no employees except themselves. On April 1st of this year, exactly 40 years after they launched their family business, they turned over the business to their longtime partner and entered full retirement. Mark and Mel have been married for 44 years, have no children, but they share a love of traveling, jazz music, and sports cars. Mark has been a Rotarian for 35 years
with 20 years perfect attendance. He is the past president of the Rotary Club of Santa Rosa. He is also chair of the Rotarian Home Exchange Fellowship. And he is, of course, the founder and chair emeritus of the Rotary Means Business International Fellowship. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से हम वेलकम करेंगे यहां पर मार्क का. आई रिक्वेस्ट अरविंद जी, प्लीज एस्कॉर्ट मार्क ऑन स्टेज एंड आई रिक्वेस्ट सर बी विद अस हियर फॉर अ व्हाइल. I request Rishi Joshi and Kuber Toshnewal, please come up on stage fast. Rishi Joshi and Kuber Toshnewal. Sir, we would like to welcome you first, then we'll hand over mic to you because I know you want to speak lot to talk to all the RMBNs. So give us a 2 minute. We would like to see you in the Rajasthani look again with the Safa. So I request Rishi Joshi and Kuber Toshnewal come together and please आप Mark को यहाँ पर Safa पहनाकर उनका welcome करें. Welcome to Business, the first ever conclave of RMB Fellowship. Aapka, thank you so much for being with us in this beautiful pink city, all the way from America. All right, thank you. So I request, thank you so much Rishi and Kuber. All the team members. I just got this point कि बेंगलुरु चैप्टर भी आप कुछ सर का वेलकम करना चाहते हैं. So if you want to do something, please come on stage. The Bengaluru chapter is also want to welcome you on stage. So I request Bengaluru chapter, please come on stage fast so we can move. I request please be with us because it is going to be a very important interaction with you of Mark. He has so many things to tell you about this RMB fellowship, how to do, what to do, and ये सारी चीज़ें बताने के लिए खास तौर पर वो यूएसए से आपके बीच में यहाँ पर है. So I request RMB Bangalore team, please come on stage. तो वो डॉक्टर साहब Bangalore team. Oh, Mel is also here. Yeah. Welcome to Jaipur again. Guys, Bangalore team, please come and oh, there are so many things, there are so many traditional things which is going to hand over to these esteemed guests, Mark and Mel. Team Bangalore is doing this honor of our chairman, emeritus, and the past first lady, the beautiful cap from the traditional one from Bangalore. Mysuru. Mysuru Peta, okay. It's good to see in Jaipur this look, and this is very attractive. Fantastic. Mysore Peta for Mel now. If Sachin sir, you can tell about these things जो हम पहना रहे हैं. This is a headgear which was used by the kings of Mysuru. Karnataka was earlier called as Mysuru, and now the name Karnataka has come. This has been a tradition to honor our guests that are here from any other place. We do give this as a token of love and respect, and we love to see them like in our attire. Thank you so much, Bangalore chapter. And there is one more thing from the Rajkot chapter. Please take your seat, Bangalore chapter. There is, Mel, you can stay with us. There is one more invitation
Mark and Mel, there is one more invitation from the Rajkot chapter to you. So I request Rajkot chapter team to come on stage and do the honor. There is an expo is happening in Gujarat, in Rajkot. So they all are from Rajkot chapter and they are here to invite you. In the second half, we will have a presentation from the राजकोट टीम जो आपको यहाँ पर बताने वाले हैं किस तरह का एक्सपो है. फिलहाल सिर्फ ये मार्क यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं तो उन्हें इनवाइट करने के लिए इस वक्त यहाँ पर आए हैं. सो दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू मार्क एंड मेल फॉर दिस एक्सपो. दिस इज एन इन्विटेशन टू यू फॉर द एक्सपो फ्रॉम राजकोट, गुजरात. Thank you, Team Rajkot. Thank you, Mel. You can take your seat. Well, thank you. I'm very honored by all of this. And I do have a PowerPoint, so I'm not going to get started until that is up and running. But this is, just as an aside while I'm waiting, has been really exciting. Obviously, my first time, my wife and my first time in India, and we felt so welcomed and just love the friendliness of everybody here. And my intention will be to talk about the history of Rotary Means Business, which you'll find out started perhaps a lot earlier than you thought it did. Okay. Okay. Sure. Then we can do it. Okay. All right. Well, I'm told I've got to kill some time. Do we have a karaoke machine here? Maybe I could do that. I don't know. Let's see what I can talk about that won't interfere with what I'm going to talk about officially. It's been interesting for me to learn pronunciation of the Indian names, and it doesn't always seem consistent. So I know that I've mispronounced many people's names, and you can count on me mispronouncing names and locations once I finally start talking. Mark, it's right, single syllable. Yes. I was named that because it was one syllable, and my older brother had a long name, and his friends shortened it to all these different things that nobody liked. So they said, well, if it's only one syllable, they can't shorten it. So that's how I got the short name.
Come on, honey. Very good. When I was learning some of the words, we wrote it out phonetically. Okay, what do we got? There is a confusion in the format, and we are just sorting out about this presentation thing, and we'll back to you soon. Thank you so much. There are things about the RMB fellowship which Mark will be telling to you, and there are few things which we need to understand from Mark. So just wait a while with us. Thank you so much, and once again, I would like to thank all the partners. Dhandapani and Company, Arvind Eternal Hospital, Maheshwari Garments, Sadardham GBPS 2024, Mehelwar Opticals, Innovative Events and Wedding Planners. And I just got an update about a session which is postponed. I told you initially like there's a session by RJ Kartik, but he's not well today. So he asked permission to reshift. If he can reshift, if he's well, he'll be with us. But we have doctor session, Dr. Sanjeev Sharma session with us, but also there is a question answer round with all the international board members, not all the board members, but international representative Mark, Sachin, Gururaj sir, Rajamohan sir and Kalpana ma'am. तो उन लोगों के साथ में भी एक interaction जो questions आप लोगों ने दिए हैं उनके जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं. So we are definitely going to have that session also soon, and there is so many things in business networking. So you are sitting here, you can interact with each other, you can share your cards, you can talk about the business, because so many classifications we have already mentioned through our introduction slides. So if you want to discuss to each other, you want to network with each other, you can do. You have a few minutes here. Meanwhile, we'll just see what is happening with our presentation, which is going to present by the Mark next. Now, as you know, technology is supposed to make life easier. Okay. All right. All right, well, thank you, everybody, for your patience. Let me start with a question. Are service above self and business success mutually exclusive? Many years ago, or for many years, talking about your business in Rotary was strongly discouraged. But in the recent past, it's been changing. And that's what we're going to discuss today, is how it was changing. But let's first go way back to the beginnings of Rotary. This is a comic that was in the American version of the Rotarian magazine back in about 2005, 2006. And it talks about how Rotary was founded. We all know that Paul Harris was the founder of Rotary. He was a young attorney. He had moved from a small town to the big city of Chicago, USA, which at the time had about 2 million people. And he was used to the small town friendliness and wasn't used to the hustle and bustle of the big city, and became very lonely. So he decided the best thing to do would be to start a club of business people for, at the time, businessmen, of course, for friendship and business. And since he wanted them to talk business, the first rule was that there wouldn't only be one person from every profession. There'd be no competitors. So on February 23rd, 1905, Paul Harris brought together a coal dealer, a mining engineer, and a tailor, again, one member of each profession, and started meeting. So, in effect, Rotary was originally a business networking club. On the lower thing there, they talk about some of the names they looked at: Roundtable Club, Trade and Talk Club, etc. But they had already started the tradition of rotating among various members' places of business. So they said, let's call it Rotary.
and that's how the name Rotary came out. And it didn't take too long for members to realize that Rotary meant more business for the team. My next slide, I was going to talk about the very first service project for Rotary, but my wife told me I should really not talk about public sales in my youth. My boss was very unethical. He would lie to customers, wouldn't pay his bills, etc. One day I just had enough, went in to resign, and he said, well, instead of resigning, why don't I sell you your department for cheap, and you can, be your own person. Well, Mel and I were newlyweds, less than a year at the time, so I had to definitely work it out with her. And she agreed, and suddenly I was a entrepreneur and had no plans whatsoever to become an entrepreneur. But we did open our first business on April Fool's Day in 1980. Well, a little more than 2 years later, that business failed. I was still too young to figure it out, and it just went down the tubes. But for Mel and myself, failure is not an option. So the next April Fool's Day, 1983, we did it again, started a business. That one actually lasted for 40 years. And I think that this advice from Richard Branson, founder of Virgin Airlines, is appropriate. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes, and then learn how to do it later. So I'd like to talk about how saying yes changed my life and changed Rotary. Our local RMB idea was brought from a nearby Rotary club by another member of our club. We started with monthly meetings every month at the same restaurant, and ironically, since I'm giving this talk here, it was a Rotarian-owned Indian restaurant. And after the third month, the organizer gave me a call, said, hey, my wife's sick tonight, can you pitch in for just this one meeting? And that was in 2009, and I never left as the leader of RMB until very recently ago. One of the members of this club was a stockbroker who was a website hobbyist named Wayne Rollins, and I'll be talking about him in a little bit. But he is the person who found Sachin Gururaj, the current chair, who actually was in service to us. He made our very first phone app. But the volunteer-made website brought us worldwide visibility. But not all paths are smooth. I really believed in this idea, so I would go around to many of the local Rotary clubs promoting it, saying, hey, let's do a business networking group at your club or in your region. And I helped maybe a half a dozen get formed in the greater San Francisco Bay Area, which would be, let's say, 200 kilometers long and maybe 60 kilometers wide. That was kind of the geographic area, population of 2 or 3 million. But one day I was giving a talk at one of the local clubs, and after the meeting, a person came up to me, identified himself as a former Rotary International director, and he told me, you better stop doing this. Rotary is not going to like you promoting business networking. Just stay on the way low. So we kind of stayed on the way low, but at the same time, I really wanted to get this to a bigger audience. So Wayne Rollins, I mentioned him before, and Sachin and myself were the core of 3, and we put together all of our bylaws and all the things we would need to go to Rotary just in case we had a chance to do that. Lo and behold, less than a year later, I get a message from Rotary International saying, we found out about you, and you can't do this. You're using the Rotary name, and this is not allowed. Now, I'm in sales. I've been in sales my whole life, and I don't really accept the first 17 no's. You got to say no to me at least 18 times before I admit I haven't made the deal. So I got on the phone to Rotary and I said, okay, you said we can't do it. I want to do it. What do we have to do it legit? And they actually gave us some very good help and helped us do all the things we had to go through to get a fellowship. And we were approved in late 2013. And none of that would have happened if I hadn't said yes to a fellow Rotarian's request to hold down the fort for one time.
All right, what is Rotary Means Business? That's our mission statement. Rotary Means Business encourages Rotarians to support the success of their fellow Rotarians by doing business with them and by referring others to them. Here's a little rundown of the history of Rotary Means Business. It actually started in 2004 as a local endeavor by this club in San Francisco, California, which is also club number 2. It migrated, in effect, to Australia when a fellow from Australia named Tony Benner discovered it in San Francisco and brought it back to Australia. We launched the chapter that became chapter number 1 that helped RMB happen in 2009. I talked about the website, that was 2011, and in 2013 we became a fellowship. In 2014 we had just 4 chapters and less than 100 members. But here's where India comes in. The first chapter in India was 2015. That was, and again, I might massacre the city names. Coimbatore, is that right, or Coimbatore? Okay. Anyway, they were number 1. And the next year we had 4 more chapters: Kolkata, Mysore, Delhi, and Ahmedabad. Was that really bad? Okay. 2017, 4 more Indian chapters. 2018, 8 Indian chapters, and then the word got out. The floodgates open. And by 2023, by right now, I just checked before I did it, we have, I think we have 159, maybe 160 chapters. So I narrowed it down to 155. Okay. Of those, 68 are in India. And as most of you know, probably not every one of you is a member of the fellowship. Sometimes chapters have memberships and they don't force you to become members of the fellowship. So we have 1,000 members of the fellowship, but we're guessing there are between 2,000 and 4,000 actual members, counting every member of every chapter. There we go. Now, what is a fellowship? I had to do a lot of research and find out what fellowships are, because there are many fellowships. It's kind of a subset of Rotary to allow people to get more deeply involved with things that they really care about. And they divide fellowships into 4 groups: social, activity, avocation, and vocation. I'm going to go through this really quickly because you don't need to see all of them, but social, things like home exchange, cruising, motorcycling. If there's any of those things you like, you can contact Rotary to join their fellowship. Activity, both competitive and non-competitive sports types things. Avocation, like amateur radio, photography, jazz, etc. And vocation, and you see Rotary Means Business is listed right there. So we have been told more than once that Rotary Means Business is a very, very important fellowship to Rotary, because they recognize that Rotary Means Business leads to recruitment and retention. You've probably seen that in your individual chapters and your individual clubs. This graphic here, which was created by a past director who was very, very helpful, talks about what Rotary even understands is the strength of Rotary Means Business. So if we have stronger members, because Rotary Means Business is improving your business, so you're a stronger member, that leads to your club being stronger. If your club is stronger, Rotary is stronger. If Rotary is stronger, people can contribute more to the foundation and it becomes stronger. Then the stronger foundation leads to stronger communities. So that cycle that Rotary Means Business is supporting, Rotary International understands is very, very important. In talking to some people yesterday and over the period of time, people have asked, what's the difference between Rotary Means Business in America and in India? And but before that, I want to talk a little bit about the membership options that the fellowship came up with, which is individual annual, lifetime annual, chapter annual. But with chapter options, we try to be very decentralized. So I would guess with the at least half a dozen chapters I've been identified here, you may have different membership rules than the other chapter, and that's fine. That's the way we want. We want the chapters to be independent and strong. But talking about some of the differences, the thing that was shocking to me coming from America was the fact that you have membership in your chapters at all. In America,
there is not membership in chapters. There is participation in chapters. You attend events and you pay attendance fees, but we don't keep a roster. We just have, say, an email distribution list or something like that. Did I do something here? There we are, okay. And then, so we don't have dues, we have attendance fees. I've also noticed that almost every meeting that I've been participated in, usually virtually, you have a very strict agenda. And in America, it's relatively casual. But the biggest difference that I've noticed is, so far as I've seen, most RMB meetings in India tend to meet in hotels or restaurants and tend to meet at the same place almost every time. And what we have done in America is just like the original Rotary Club. We rotate our meetings to different members' places of business. And that can make a big difference. At my local chapter, we were having attendance averaging 20, 25, something like that. And a fellow who owned a custom door factory said, "I'll host it." People love looking at factories. People love looking at how you do your business. And we had 80 members, 80 attendees at that meeting at a factory versus the standard 20 or 30. So we've also, at our local one, we have an air museum at our local airport, and we met there. So it's something to consider, is letting your members host the meetings, because it can really make a big difference, and it's what Rotary used to do. What Rotary, yeah, you used to do, yeah. Another question has been, who is allowed to attend? Rotary has changed their fellowship rules, and any new fellowship coming into approval has to allow any human being to attend or to even to join fellowships. When we were chartered, we had the option of restricting our membership, and the whole point of RMB is to do business with Rotarians, to support Rotarians. So we are still allowed to restrict our membership to Rotarians, and chapters are still allowed to restrict their membership to Rotarians. But there's also different attendance rules, and I found this interesting. Again, Rotary would like anybody to attend. Some chapters are very, very strict. You've got to be a Rotarian and a chapter member to even attend. Others are a little bit looser. You still have to be a Rotarian, but you don't have to be a chapter member. You're hoping that if they attend, they'll join the chapter. Other chapters are ones in the US usually allow non-Rotarians to attend, say, 2 or 3 meetings to kind of build the interest, and then say, well, if you want to keep coming, you've got to become a Rotarian. And the chapter I mentioned in Sydney, Australia, had a very unique setup. A member must bring a potential Rotarian in order to get in the door. They used it very seriously for recruiting. So there's lots of different ways you can do it, and again, I mentioned that we like to be very decentralized. So how many chapters do we have? We talked about that. This is a map of the world, and this, by the way, I downloaded this from our website, so you can get this straight from the RMB, RotaryMeansBusiness.org website. This is updated as of a couple days ago, so this should show virtually every chapter in the world. There's the US. And interestingly, we have a concentration on the West Coast, on the Northeast, and the Southeast. And that's because each of those was where a director located and would help rebuild it a lot. The Mark Vickers I mentioned that did that stronger thing, he was in Florida, and Florida is not a super heavy populated state, but it has many more chapters per people than almost anything else. And I don't think you care about what's happening in India, so I could skip this? No? Okay. So this shows all of the chapters as of date except for one. All right, tell me if I got this anywhere near right. Jalandhar? Jalandhar, is that anywhere close? What? Jalandhar? Okay. That's why nobody applauded. I didn't even know what town I was mentioning. Okay. Anyway, they happened to be cropped out that were way too far north. But as I mentioned, this is the fastest growing region. Since 2020, only 3 years, you've added 35 plus chapters. Now, how can we add more chapters? Well, this is my crude graphic that I made
2 hours ago in the hotel room, so. Because I talked to a bunch of people last night, and I said, I got to add this to the presentation. So many people told me that their chapter was sponsored by another chapter. And sponsorship is a core value of Rotary. Almost all of you had to be sponsored to get into your Rotary club. And clubs often acknowledge the sponsors. I have a little lapel pin that says I sponsored to some people. But there's really many reasons to sponsor chapters. Maybe your chapter, some chapters are exclusive, only one person from a business. Some chapters are more broad-based. But if you're more restricted and all of the categories are filled, then maybe there could be a second chapter to allow some of those people to also participate. If your city is large enough to support multiple chapters, and there's, you know, this city here, I think we learned is like 6 million plus, something like that. In any event, if it's a couple of million, it could support more than one chapter. Or how about the outlying areas? Is there suburbs around here that could benefit from that? Or even you've got a friend who's at the other end of the country, but you tell him about RMB and you invite him to launch it. The directors we have here are very, very willing to support anybody who wants to get a new chapter. So you can always reach out to anybody at Rotary Means Business and we can get you to the right person. But the best way, in my opinion, to help RMB grow further is to have chapters sponsor more chapters. And if you take nothing else away from my talk, I think I'd like you to take that away. I'm also going to be making a suggestion to our board that we create some sort of recognition for chapters that create other chapters. So let's talk about RMB's transition and the future. I mentioned that my wife and I started our business on April Fool's Day, a little more, 40 years ago, and a little more than a month ago, we retired from our 40-year-old business. Guess what? On April Fool's Day. To me, business networking is no longer really a value because I'm retired. But I've known Sachin from, I was going to say almost the beginning, but really before the beginning of it being a fellowship. And I thought we would need some new enthusiastic leadership. So privately, before I announced to the board, I asked Sachin, can you take this thing over? And he acquiesced to do it. And we have already seen so many dynamic moves from Sachin, and I know he's going to have some more things to talk about. And so he is absolutely the right person to lead RMB into the future. So I want to say thank you to Sachin for offering to do that. And I'm going to close it with a quote from way in the past. What? It stopped before my last slide? Can you manually forward it there? To get me to the next slide? Oh wait, did it? The battery die? Okay. One more try. No, it's not happening. Well, you won't have the graphic, but I'll read it to you anyway. So it's got a picture of Paul Harris and the words. This is 1911. Paul Harris said, "If anyone tells you that it's reprehensible to make $1 or $2 for the wife and babies from club associates and straightforward business transactions, tell that person that some foreign substance has gotten into his carburetor." Now, how many people here know what a carburetor is? Okay, that's what I would think. Anyway, thank you very much, and I appreciate it. Yeah. Arvind Batra, Mark is calling you on stage for this thing. You would like to mention about? Yes. Yeah, please. Well, if you've seen the agenda, you know that Arvind's going to be talking about some things in Mexico. Arvind took a long, few-week trip to Mexico to help expand there. That's one of the things we're doing. And he received some things from the folks in
in Mexico, and I'm going to go ahead and officially present those to him. I'll try to do this from the Spanish, but this is a plaque honoring him for all his contributions to helping RMB grow in Mexico. Right, yes. I think there's a second thing too. There was a statuette. All right, so ladies and gentlemen, just after this thing which is happening, we are going to have our next round of introduction session. We will definitely invite more and more RMBians on stage to introduce themselves, and we will tell their classification, their company, their deals and about. So please be ready with us. The statuette has walked off, so congratulations again to Arvind for this award. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mark, once again. And again, we are going to have our introduction round, as I mentioned. And for the same, I request Rajamohan sir, please come on stage to do the honor. So, अब Rajamohan sir जो हैं, next हमारे जो members हैं, उनको यहाँ पर introduction round जो है, complete करने के लिए यहाँ पर मौजूद है. And I request one more thing. जो जयपुर चैप्टर के हमारे यहाँ पर मेंबर्स हैं, उनका हम इंट्रोडक्शन राउंड, जो क्लासिफिकेशन राउंड है, वो हम पोस्ट लंच प्लान हम करने हैं, तो हम पोस्ट लंच वो करने वाले हैं. सो प्लीज स्टे विद अस एंड वी विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट मार्क टू डू द ऑनर फॉर द सेम. बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू दोज मिसिंग मेंबर्स जो हम नहीं आ पाए थे उस वक्त जब मैंने उनको बुलाया था. सो आई रिक्वेस्ट फर्स्ट फ्रॉम गोवा सतीश राजमाने. Satish Rajmane, he just joined us here. Satish sir, please come on stage. We would like to call you on stage we will tell people about you. Classification is tourism. He's from RMB Goa. His company name is Multiple Task Holidays Goa, and he deals in domestic and international holidays, MICR, conferences, events and destination weddings. Welcome to Jaipur, Satish Rajmane sir from Goa. Thank you. And yeah, I was about to say, I just got this update. He's Vietnam से ही directly अभी यहाँ पर आ रहे हैं. Thank you so much, sir, for your nice gesture and presence. The next one is Nishant Mehta, sir, from Mumbai. Nishant Mehta, sir. He's again missing. Nishant Mehta, sir, are you here? Okay. Moving further, Nishant Vora. He's not here. Okay, वो present नहीं है यहाँ पर. Okay, now moving ahead. Radhika Nishan sir is not here. We're moving further. Okay, from the next one. Arul Santhalin. He's not here. Okay, he's also not here. I got the update. He's from Madurai, right? तो हम उनके classification ज़रूर यहाँ बताना चाहेंगे. Dry groceries exporter हैं. Fresh माली गई प्राइवेट लिमिटेड ये इनकी कंपनी का नाम है. ड्राई ग्रोसरीज एक्सपोर्ट है. अनफॉर्चुनेटली इनकी मदर की तबीयत लास्ट मोमेंट पे खराब हो गई, तो ही कुड नॉट टर्न अप. Rotarian Arul Sendilan is the second registrant. Joseph was the first from Coimbatore, and Arul was the second to register for this conclave. He couldn't make it because his mom fell sick and she is admitted in the ICU. So, however, I am going to talk about him for a few seconds. Arul Sendilan is a person who supplies food-related materials in large volumes to Canada. So people in this forum or your fellow members, if you are into agriculture business, he can buy a lot of volume. For example, if you are manufacturing cashews, yes, he can export it to Canada in large volumes. He is looking for buyers, okay? He is looking for buyers. So he will buy a lot of, he is looking for sellers. He would buy a lot of volume of anything for that matter, okay? So anything to do with agricultural produce, contact me. I'll connect you to Arul Sendilan. Thank you. Thank you so much. Moving further, Nishant Mehta sir is with us from Mumbai. Please, sir, come on stage.
Nishant Mehta sir is from Mumbai, RMB Mumbai. Classification, he is a chartered accountant. The company name is Nishant S. Mehta and Company, and he deals in finance and serial entrepreneur. So मैं request करना चाहूँगा हमारे सभी RMBians जिनको हम invite कर रहे हैं, उनका आप यहाँ पर तालियों से स्वागत करते रहें और उनकी classifications को आप अच्छे से note कर लें. जब भी आपको business networking का मौका मिलेगा, you will interact with each other. Next, I request Sri Vignesh. Sri Vignesh from Madurai. Sri Vignesh from Madurai. So please come on stage. And I request जिनका serial number 50 तक है वो please तैयार रहें. जिनका कार्ड पे पीछे जो number 50 तक है वो लोग please ready रहें. मैं आपको invite करूँगा एक एक करके. RMBN Sri Vignesh, RMB Madurai से classification is he's into 3D printing and signages, deals in signages, 3D printing, UV printing and all kind of signages. Company name is Print Perfecto Private Limited. Thank you so much RMBN Sri Vignesh. The next one is N. Sudhakaran. N. Sudhakaran, sir, from Madurai. RMB Madurai से N. Sudhakaran sir यहाँ पर मौजूद हैं. Classification is computer and laptop. V-Care Systems इनकी कंपनी का नाम है and he deals in multi-brand computer. इनका शोरूम है और कंप्यूटर्स सेल्स में ये मेजरली डील करते हैं. बहुत सारे ब्रांड इनके पास अवेलेबल हैं. The next name is Kuberdin. Is he with us from Madurai? Kuberdin. Kuberdin? He's not here? Okay. S. Kamalnathan. S. Kamalnathan from Madurai. S. Kamalnathan is from Mumbai. The next one. S. Kamalnathan, Madurai, classification courier services, deals in ST Courier South Tamil Nadu and Sun Associates इनकी कंपनी का नाम है. Thank you so much. S. Kamalnathan. KV Satish Kumar. Do we have KV Satish Kumar with us? Yes, we have KV Satish Kumar. KV Satish Kumar का slide please यहाँ next. He's also from Madurai, right? Classification is real estate. Sync Associates Real Estate Consultancy आपकी कंपनी का नाम है. And he deals into real estate consultancy. आपका बहुत बहुत welcome. Thank you so much. Then Shan Mugavel. Shan Mugavel. Shan Mugavel. Welcome to Jaipur. He is from Madurai. So we are not familiar with the names of these areas actually. Absolutely, you are pardoned. Shan Mugavel is the founding chairman of the first ever Rotary only RMB club in the world. So safer side, I'll call Shan in short. Classification is tax consultant. Company name is SG Associates and he deals in income tax, GST, business compliances and consultation. Welcome to Jaipur, Shan. The next name is, now we are moving to Pune chapter. I request CD Mahajan. CD Mahajan sir. Sir please come on stage. मैं अब request करना चाहूँगा पुणे chapter से कि please आप लोग तैयार रहें. I will call you on stage one by one. There are few names from Pune chapters. CD Mahajan sir is coming on stage. Sir, here are the stairs. So CD Mahajan sir is from Pune. Classification is boiler manufacturer, A+ Projects and Technology Private Limited. इनकी कंपनी का नाम है. And he deals in oil field equipments and industrial boilers. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत. Thank you so much यहाँ पर हमारे बीच आने के लिए and enjoy this conclave. The next name is from Pune is Anand Kulkarni. Anand Kulkarni sir, please come on stage. Anand Kulkarni sir is from Pune. RMB Pune. The classification is he is business coach and artist. His company name is AM Kulkarni and Associates and deals in business planning and execution, landscape painting. Wow, this is something different. Business के साथ में आप artist भी हैं.
and he has his stall also, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर से visit कीजिएगा. The next name is Dr. Megha Sharma from Pune. Dr. Megha, please come on stage. RMB पुणे से डॉक्टर मेघा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. So classification is travel, tourism and serial entrepreneur. She is. Company name is Travel Crafters and deals in travel, tourism and investment banking. RMBN Dr. Megha Sharma from RMB Pune. Thank you so much, Megha, for being with us. The next name is from Pune is Yeshwant Kulkarni. Yeshwant Kulkarni sir, please come on stage. Yeshwant Kulkarni sir is on stage. He's coming on stage. RMB Pune Business Circle से ये हैं and इनका classification is environment wastewater treatment with eco technology. The company name is Green Water Revolution Private Limited and he deals in water pollution control, doing very good and something different for this earth. Thank you so much. Dilip Kambojkar, the next name is Dilip sir. Dilip sir is from Mumbai. So I request Dilip sir to please be with us on stage. He's from RMB Pune and his classification is authorized dealer Reliance Industries के आप हैं. VK Polymers इनकी कंपनी का नाम है and polymer granules में ये deal करते हैं. RMBN Dilip sir from RMB Pune. Sir, welcome to Jaipur and enjoy this fantastic day. Mahesh Saptarishi. महेश सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप स्टेज पर आएं. ही इज़ फ्रॉम पुणे. महेश सर. So the next RMBN is Mahesh Saptarishi from Pune. Classification is solar water heating systems. His company name is SM Enterprises and he deals in solar water heating and systems. Rooftop solar PV systems. Thank you so much for being with us. Enjoy. Jyotindra Zaveri from Pune. I request Jyotindra sir to be on stage. Next on stage. RMBN Jyotindra Zaveri from Pune. Classification is meditation expert and he is from Pune, as I told you. Scientific meditation इनकी company का name है और he deals in reversing disease by teaching meditation method. It can help you in your business to do well, so you can always take his services. Jyotindra Zaveri, RMBN from Pune. The next name is Kaustubh Vadekar. Kaustubh sir, please come on stage from Pune. Kaustubh Vadekar, RMB Pune Business Circle. Classification is financial services. Company name is Era Capital Private Limited, deals in investment, insurance, loans, and real estate. Thank you so much. Thank you so much. Now, Radhika, the last one in introduction group, the last one, Rishikesh Tiwari. I request Rishikesh from Mumbai. Rishikesh, are you with us? Please, please come on stage. You didn't get your lanyard? Okay, okay. Rishikesh, thank you. RMBN Rishikesh Tiwari from Mumbai. Classification is IT and digital. Deals in IT and digital. Karnes Infotech Private Limited. इनकी कंपनी का नाम है. Thank you so much. Okay, thank you. एक second, sir. I would like to call Vimal Patel sir also on stage. He's from Rajkot and ये हमारे स्पॉन्सर भी हैं इस इवेंट के अंदर. So विमल पटेल सर, हम चाहेंगे कि एक बार आपको हम ये एक्नॉलेज करें. राजकोट से, राजकोट ग्रुप से, राजकोट टीम से ये हैं. कैन वी चेंज द स्लाइड? इनका नाम, इनका स्लाइड नहीं है, एक कॉमन स्लाइड आप कोई भी चला सकते हैं. विमल पटेल सर, थोड़ा आप बता भी दें कि किस चीज़ में आप डील करते हैं, फिर आपकी प्रेजेंटेशन में आप डिटेल से बता दीजिएगा. या माई सेल्फ विमल पटेल फ्रॉम RMB राजकोट. मेरा बिजनेस कैटेगरी है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. नोवा इंटरनेशनल मेरे बिजनेस का नाम है और नियर अबाउट 44 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है. हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसके अलावा हमारा ट्रेडिंग हाउस है. थैंक यू वंस अगेन, विमल पटेल फ्रॉम RMB राजकोट. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much, Rajamohan sir, for your time.
Thank you. All right, moving further, as we all know, Arvino is one of our sponsor and very important to us. So they have given some beautiful jewelry gift hampers to some beautiful women, and they will also give some more people these beautiful gift hampers. But before that, I request आशीष पारिक सर, आप एक छोटा सा जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए स्टेज पर आएं, और उसके बाद में मैं यहाँ पर हमारे बीच जो कुछ लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को बुलाने वाला हूँ स्टेज पर, उन्हें यहाँ पर ये ज्वेलरी गिफ्ट हैम्पर्स भी वो हैंड ओवर करेंगे. सो नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ अर्विनो. ओके, वी हैव क्लिकर विद अस. आई रिक्वेस्ट तरुण झालानी जी. तरुण जी कहाँ हैं आप? प्लीज कम ऑन स्टेज. आप सर का पहले वेलकम करें साफा पहना के, और उसके बाद में हम प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे. पारिक सर प्लीज स्टेज पर आएं. Sir, thank you so much for being our sponsor for this event, for your support, and we would like to see you again and again, and for your beautiful jewelry. And next, मैं माइक हैंड ओवर करूंगा यहाँ पे आशीष पारिक सर को, जहाँ पर आप कुछ ब्रांड के बारे में, अफोर्डेबल लग्जरी ज्वेलरी के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं. सो नेक्स्ट हम आशीष पारिक सर को यहाँ पर सुनने वाले हैं. आशीष पारिक सर, ओवर टू यू. चेक ओवर. Good afternoon, everyone. I am Ashish Parekh, CEO of jewelry manufacturing company Arvino. So let's see the Arvino first. Arvino, we deal in jewelry. We produce all kind of jewelry, be it a silver, brass, gold, studded with a stone. We produce every kind of jewelry. See, Arvino, actually, we are at Sitapura, and we employ more than 250 workers and staff members to produce best kind of jewelry for everyone. Our mission is to provide all kind of jewelry articles under one roof. We start from melting the silver, filing it, polishing it, studding it with stones, and then packing it and exporting it. Our history. Arvino is founded by our chairman, Mr. Arvind Agarwal, who started the business from first scratch. Although his father was a dal mill owner, his main business was pulses. But Arvind, he started this business from first scratch. He begins his journey from one article and one craftsman. He took that jewelry article to US and then shown this article to business houses. His sample line was well appreciated, and then his journey begins. So it is from his passion that he started the business on its own, without any parental help. These are all kind of, jewelry and manufacturing facilities we have. This is how we start from wax, and then we go for casting. This is how stones are assorted, and we pick best kind of stone and then stud it in the jewelry. This is the manufacturing facility where we have skilled artisan right from 25 years. This is our plating plant. We do all kind of plating, gold plating, rhodium plating, and all best kind of plating one can have for jewelry. This is how each and every piece is being quality checked, and then we give best quality article to the jewelry lovers. This is our export house. These all are export executives who work and bring business all over the world. Sustainability. It is the prime factor for us. We do have sustainable audits. We are qualified from SEDEX, RJC, Macy's, and all CTPET and social audits. We are into environment also. We produce jewelry with an eco-friendly atmosphere all over the world. We aim to give jewelry on affordable price.
we hone our manufacturing abilities such that the jewelry is being produced at very lower cost, and we add a limited benefit and limited profit out of it, and we sell jewelry to the jewelry lovers. This is how our chairman Arvind Agarwal is bestowed with quality to reduce the cost, no compromises over the quality, and best services to all over the customers. We start from CAD, CAM, designing, melting the silver, producing stones, everything under one roof. We work for US, UK, and Australia, and some of the buyers, Macy's, Sundance, Tony May, and Shilpada. These are prime customers. We serve for these customers. They are attached to us since last so many years because of our quality and our strength. So we welcome you all to Arvino. We are at Sitapura. Come and see our facility, how we work, how we toil ourselves to give manufacturing facilities to all jewelry lovers. Thank you very much. I once again thank you all for being here. Great. Thank you so much, Parik sir, for this fantastic knowledge about your product, and definitely जो गिफ्ट हैम्पर्स आप हैंड ओवर कर रहे हैं हमारी विमेंस को, उनको काफ़ी पसंद आने वाला है. मीनवाइल आई रिक्वेस्ट आर सम ऑफ द लेडीज हु आर प्रेजेंट हियर, जिन्हें हम ये सर से हैंड ओवर कराना चाहेंगे. I request Sujata Gururaj ma'am, please come on stage. We have actually Arvino has a gift hamper for you, this jewelry gift hamper for you. So please gift hampers लेकर आप स्टेज की तरफ आएं. This is for you, Sujata ma'am. Congratulations from Arvino. Fantastic. Thank you so much. We were looking for Miss Mel, but she's not here. Where is? Oh, she's in the room. She'll come and we'll call you back. Okay? We'll call back. Thank you so much once again, Ashish Parik sir, Arvino से हमारे बीच यहाँ पर इतनी सारी information देने के लिए और gift hampers hand over करने के लिए यहाँ पर थे. The next we have a very special person, as we mentioned in the morning, and good friend of Chair RMB Jaipur, Arvind Batra. I request Nurveen on stage once. Nurveen, we would like to have you on stage. And मैं प्रतीत विजय वर्गीय को request करना चाहूँगा कि please आप stage पर आएं for welcoming Nurveen on stage. मैं Nurveen से कल रात को काफ़ी सारी बातचीत हुई थी, right? We had so many things. और मैंने नारगढ़ के बारे में इनको काफ़ी कुछ बताया. अब वो सच्चा था झूठा इनको अभी भी कंफ्यूजन है. नहीं, बट दैट वाज राइट एक्चुअली. प्रतीत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नूरवीन को यहाँ पर आप वेलकम करें और साफा पहनाएं. गिव हिम राजस्थानी लुक. ऐसे हमारे यहाँ दूल्हे करते हैं. ग्रूम डज इट लाइक दिस इन इंडिया, लाइक स्पेशली हियर ड्यूरिंग दैट वरमाला सेरेमनी. Okay, thank you so much, Prateek ji. And now I request Nurveen to come on mic and say a few words about RMB and your recent appointment. Please share your overview. Thank you. Good morning, friends. Well, I can't hear much. Good morning, friends. Right, now I can see you are much awake. I know you're hungry. It's lunchtime. I can see from here many of you were looking at your watches. Right, so thank you RMB Jaipur for putting up such a marvelous gathering. Like Sachin just said, I'm privileged to getting appointed as RMB Director for Africa as from 1st of July. That's one of the reasons I am here, because like RMB Chair, Emeritus Chair Mark said, the District Governor said about it, Sachin said about it,
Imagine a stronger RMB. Imagine a stronger business people in Rotary. The ecosystem is very simple. Now, the point I want to make here, doing business, India community is doing it marvelously well. The world is within reach now, and this is our role as RMBian, the leadership team, but not just us, your leadership team. My presence here is testimony to that. There's a function happening in Africa. I hope you guys attend from the Jaipur team. We hope to have something similar in Africa very soon, like an RMB gathering in Africa. We are working on it. Kenya chapter is happening very soon. Madagascar chapter is happening. Rwanda chapter is happening. So there's a lot of chapter emerging in Africa. And doing business in Africa, there's one key word you always need to remember: patience. Nobody waits for anybody with a purchase order. So you need to have the patience and the resilience to succeed. And succeed, I know you will. So on this note, ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you so much, Nurveen, for your words and sharing your knowledge with us. It was great to have you, and you are with us till tomorrow, I'm sure. We're going to have so many things together. Do we have, Mel is not here. We were looking for her. So, thanks. Okay. Mark, Mel is here? Oh, she's not here. Okay. Okay. So, we are waiting for our next session to start. In just shortly, we will be having Dr. Sanjeev Sharma with us in this hall. And he is Director, Interventional Cardiology. And he's going to share and give you those knowledge about your health. And the beautiful session we have planned, it is about healthy heart and healthy business. इसके ऊपर वो बात करने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, जब वो यहाँ पर आएंगे, हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी बिजनेस के बारे में. बिकॉज उनका ये मानना है, हर एक डॉक्टर का यही मानना है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आपकी सेहत अच्छी होगी. अच्छी परफॉर्मेंस गिव्स यू नाइस परफॉर्मेंस गिव्स यू गुड रिजल्ट्स, नाइस रिजल्ट्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी मेंबर who is present here, not present here, सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. He is on his way. Shortly he will be with us. And meanwhile, I again like to thank. Oh, he's here. So Dr. Sanjeev Sharma is here. आप ज़ोरदार तालियों से, सर मैं सीधा आपको स्टेज पर ही बुलाना चाहूँगा. डॉक्टर साहब आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ सीधे, क्योंकि all right, ladies and gentlemen, Dr. Sanjeev Sharma, Director, Interventional Cardiology, he's with us, and he is representing EHCC Hospital here. And he is one such personality जिनसे बात करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारी वो नॉलेज रखते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है. He is DM Cardiology, AIMS, New Delhi से. MD, Internal Medicine, gold medalist from SMS Medical College, Jaipur. MBBS, SMS Medical College, Jaipur. Fellowship in American College of Cardiology, FACC. ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ. अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने प्रेजेंटली आप एज ए डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एट इटर्नल हॉस्पिटल सर्व कर रहे हैं. इससे पहले आप सीनियर कंसल्टेंट के रूप में फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल के अंदर भी कर चुके हैं. इससे पहले आप जूनियर कंसल्टेंट के रूप में एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में भी सर्व कर रहे हैं. आप कर चुके हैं. आपकी एक्सपर्टीज है कॉम्प्लेक्स कोरोनरी एंजियोप्लास्टीज थ्रू रेडियल रूट. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर के बारे में है, बट मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब मैं सर को यहाँ स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा. सो आप सभी की ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर संजीव शर्मा को मैं चाहूँगा इस स्टेज पर हम इनवाइट करें. संजीव सर, प्लीज़ कम ऑन स्टेज.
And I request Kuber, please come once. Kuber Toshnewal, he's here and he's representing Maheshwari Garments as well, one of our sponsor. Please come, और सर का आप यहाँ पर welcome करेंगे. But before that, I request Kuber session शुरू करें. कुबेर सर का welcome करें. आप साफा पहना कर यहाँ पर. Thank you so much. So can we have one more mic with us here? One more cordless. So please बैठिए आप. हाँ, sir. All right, so अब हमारे साथ में डॉक्टर संजीव शर्मा यहाँ पर हैं. सर लंच के लिए रोक के रखा है सबको. 1:30 का टाइम दिया था हमने एंड अब आधा घंटा आपसे हम बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद में लंच करने वाले हैं. तो आपकी इनपुट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि लंच में इनको मालूम चलेगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हेल्दी हार्ट के लिए. बिकॉज हमने सेशन का नाम ये रखा है हेल्दी हार्ट हेल्दी बिजनेस. सर यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं आपको बता दूं वो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग फील्ड से. RMB रोटरी मीन्स बिजनेस करके एक एसोसिएशन है, रोटरी का ही एक पार्ट है, रोटरी का हिस्सा है RMB, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग मेंबर हैं विच एक्सचेंज देयर बिजनेस नेटवर्किंग एंड दे डू बिजनेस. एंड उसी का ये पहला नेशनल कॉन्क्लेव यहाँ पर हम लोग आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देर आर पीपल फ्रॉम साउथ, इफ we make our language little bit English also, or whatever you speak in Hindi, if you can translate in English also, it will be better to them to understand. So let's begin. So सबसे पहले I request डॉक्टर संजीव शर्मा को जयपुर में बहुत सारे लोग जानते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि बात दिल की करते हैं. दिल अगर एकदम ठीक रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा. तो दिल की बात एक अलग रूप में भी होती है, जो दिल की बात आप करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो आप इस दिल के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से इसका ख्याल हम रख सकते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए पूरे दिन के अंदर. Namaskar and very good afternoon. It's my pleasure to be here with the special group Rotary means business. This is the first business talk with the Rotary group. I am happy to be here. Thank you. और जैसे सेशन के लिए कहा था, it should be an interactive session, so that everyone get to know about how to keep the heart healthy. Exactly. The first question is the tips for keeping the heart healthy. Yeah, on the daily life, like what should we do to keep our heart healthy? Like little things which we don't know. When we go into difficulties, then we go to the doctor. Then doctor tell us. You should walk, you should do this, you should do this, you should not eat this, you should not drink this. So what are those little things which needs to be there, which needs to understand each and every human? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, heart healthy lifestyle is an overall healthy lifestyle. This not only prevents from the development of heart disease, but also from all chronic illnesses. All chronic illnesses means all lifestyle diseases. लाइफस्टाइल डिजीज़ की मैं बात करूं तो उसमें आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, cerebrovascular disease, strokes, and also cancer. So the healthy lifestyle applies for all the chronic illnesses. All right. And which includes your diet, your physical activity, and your stress management. Oh. All the three parameters should be taken care one by one. अब इसमें अगर आप बात करें कि डाइट की ये जो पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये आप सभी ने सारी मीटिंग्स में और इतने सारे जो इंटरेक्टिव सेशन में उनमें पहले कई बार आपने सुने होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन द ओनली थिंग इज वी डोंट इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफस्टाइल. एग्जैक्टली. ये उसी तरह से जैसे कि 31 दिसंबर हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं कि आई विल रिड्यूस माई वेट बाई 10 kgs और I'll be more physical active, I'll be taking care of my diet. Okay. लेकिन वो कुछ 1-2 हफ्ते के बाद में हम सब भूल जाते हैं. तो ये बातें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि इसमें डिस्कस करने के. फर्स्ट है आपका डाइट. के लिए फर्स्ट है कि इट शुड बी इन मॉडरेशन.
जितनी भी आपकी एपिटाइट है उससे आप कम खाइए, ओके, है ना. इफ़ यू आर 100 यू ईट बाय 70, 60 और 70. ये इसका सिंपल एग्जांपल है. हो सकता है आप में कई ने पढ़ी होगी बुक इकिगाई, है ना. यू माइट हैव रेड द जापानीज वे ऑफ हेल्दी लिविंग. दिस इज बुक अबाउट द सेंटेनेरियंस, जो 100 से ऊपर जो लोग जिन्होंने लाइफ स्पैन रहा है ओकिनावा टाउन का, तो उसकी लाइफस्टाइल डिस्कस करी है. दे हैव लुक इनटू ऑल द लाइफस्टाइल फैक्टर्स. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट. ईट इन मॉडरेशन, डोंट ईट टू मच. हम ओवर ईट करते हैं, खाना कम खाइए फर्स्ट. सेकेंड, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर कार्ब इनटेक, योर फैट इनटेक एंड ऑल्सो द प्रोटीन इनटेक, ओके, है ना. इसमें कार्ब का पहले एक ज़माना था कि हम जो भी कार्ब खाते हैं उसको आप मानते थे कि ये सब सेफ है, फैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. नाउ द थिंग इज द कार्ब इन एक्सेस इज बैड. जो भी हाई कार्ब डाइट है विच इंक्लूड्स योर वीट, योर राइस, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द फैट और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है. तो डाइट में आपको कार्ब को जितना लिमिट कर सके उतना अच्छा. टेक प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो द लॉट्स ऑफ फ्रूट्स विद डिफरेंट कलर्स. Okay. बीटा कैरोटीन होता है. एंड फैट शुड बी इन मॉडरेशन. लाइक जो भी आप फैट कंटेंट है इट शुड नॉट बी नो. अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल लिमिट्स में, तो यू कैन ईट इन लिमिटेड अमाउंट. यू कैन ईट ऑल्सो द देसी घी, जो काउज घी बोलते हैं, वो भी आप लिमिट में ले सकते हैं. एंड ऑयल की बात करें तो कीप ऑन चेंजिंग ऑयल्स. इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. तो कोई भी एक ऑयल को हमेशा काम में लेने जाए, यू कीप ऑन चेंजिंग ऑयल्स. या 2 ऑयल आप ओपन रखिए, वन इज इन ओमेगा 3 और वन ओमेगा 6, और आप सब यूज़ करिए. एंड टेक इन मॉडरेशन. ऑयल को लिमिट करें, चेंज करते रहें. सैचुरेट फैट को लिमिट करें, लेकिन टेक एवरीथिंग. अब थर्ड आती है आपका प्रोटीन इंटेक. प्रोटीन इंटेक में जो अपने वेजिटेरियंस हैं उनके लिए लेग्यूम्स हैं, आपको स्प्राउट्स लेते हैं, आप दालें लेते हैं और आप पनीर लेते हैं, इनमें प्रोटीन होता है. नॉन वेजिटेरियंस में फिश और चिकन आप ले सकते हैं. ओके, जो रेड मीट शुड बी अवॉइडेड. रेड मीट इज रिच इन बैड फैट, सो रेड मीट शुड बी अवॉइडेड. सो हमारे जो बाहर के जो गेस्ट आए हुए हैं उनको हम लाल मांस रिकमेंड नहीं करेंगे. लिमिट में, occasionally allowed है. तो दिस इज अबाउट द डाइट. टेक प्लेंटी ऑफ फाइबर्स. सेकंड अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी में यू कैन हैव एनी एरोबिक एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस. सिंपलेस्ट इज अ वॉक. जस्ट नीड अ पेयर ऑफ शूज, गुड स्पोर्ट शूज. अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है, आपको काफ़ी मूव करना पड़ता है, तो यू कैन हैव ए पेयर ऑफ गुड शूज एंड देन यू कैन वॉक अराउंड इन योर एनी ऑफ द सिटी वेयर यू आर. 45 minutes of brisk walk is good enough, at least 5 to 6 days in a week. Right. और any aerobic sports of activity. अगर आपका रेगुलर रूटीन है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, यू कीप ऑन प्लेइंग बैडमिंटन, टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, basketball, any sports of your choice which includes your aerobic activity at least for 30 to 45 minutes daily. And third is the stress management. Exactly. Stress management में सबसे important बताएंगे कि which incorporates your other thing also, exercise also, that is yoga. Yoga and meditation is the best practice and it's being practiced in the Western world. बाहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. ये तो ऑलमोस्ट 10 years back आई वॉज इन Miami. मैं बीच पे अर्ली मॉर्निंग में वॉक कर रहा था, तो मेरे को दूर से लगा कि एक ग्रुप है और दे आर डूइंग समथिंग. मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देयर वाज अ फॉरेन इंस्ट्रक्टर, the white instructor, and she was teaching yoga to almost 50 people. Oh, nice. And they were doing all the stretches, all breathing exercises very meticulously. And तब मेरे को आके लगा उस टाइम पे योगा का यहाँ पे एक्सेप्टेंस इतना नहीं था. अब हो गया है क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे मोदी जी ने जब डिक्लेयर किया है वो भी है. Otherwise, people are following it. In also, as a medical professional, we also recommend. Yoga is a holistic thing, which includes all stretching exercises, good for your spine, good for your muscle tone, and also includes your breathing exercises. तो कोर मसल को भी स्ट्रेंथ देता है और आर्म और लेग्स की मसल्स को. इसके साथ साथ में आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो प्राणायाम की जो 4-5 एक्सरसाइजेज हैं, इट इंक्रीजेज योर लंग कैपेसिटी, ऑल्सो टोन डाउन योर सिंपैथेटिक टोन. सिंपैथेटिक टोन ही है जो कि आपको बीपी को एलिवेट करती है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के लिए आपको प्रेडिस्पोज करती है. तो योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, दैट डिक्रीजेस सिंपैथेटिक टोन, improves your parasympathetic tone. So the balance is more towards your healthy side, like you have less anxiety, you have a decreased breathing rate, and also tone down your blood pressure and also decrease your heart rate, which is very important. जितना हाई हार्ट रेट रहता है, हाई बीपी रहेगा, उस आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स होंगे. जैसे ही आप ब्रीदिंग की रेट को कम करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, और उसी से हार्ट रेट और बीपी भी कम होता है, तो आपको इन सब जो सडन कार्डियक इवेंट्स से इन सब के रिस्क कम होते हैं.
Yoga is a very good, which includes your exercise as well as your stress management. Other thing is a meditation. Meditation is very, often it's discussed very frequently, but it's not being used. सब लोग बोलते हैं आंखें बंद करके जैसे ही मैं breath पे focus करता हूँ तो दिमाग इधर उधर जाता है. They try to do it, and within a couple of days or weeks, they lose it. But if you start doing meditation, it really helps. It really helps in preventing everything. And also, you should follow any hobby or of your choice. Routine हमारा सबका है. आप business में आप you 10, 12 or 14 hours every day you will be busy, but you should have one hobby, whether it's singing or your art, you making some paintings or any hobby of your choice. तो उसको आप follow करिए. And you should spend some time with the family and should have vacation. You should, at least 3 or 6 months after 6 months, you can have a 3 or 4 days break, and once in a year, you can have a 7 to 10 days break, depending on your busy schedule. Sir, like आपकी जो बातचीत सुने उससे कुछ एक सवाल मेरे यहाँ पर आए हैं और कुछ सवाल नेचुरली भी हैं. And I request all of you, अगर आपके भी डॉक्टर साहब से कुछ सवाल हैं, so we'll give 5 minutes at the end of the session about this questions which you can ask directly to Doctor Sir. I request Sachin Gururaj Sir to come up on stage. Good afternoon, Doctor. Yeah, you can ask the question. Doctor, see, most of the people here sitting are all into business. Yeah. We go through a lot of stress throughout our life. So I have a couple of questions actually. One thing is, can you briefly tell about cortisol so that everybody understands how important it is to have a stress-free life? Very briefly. And then at the end of it, first aid in case of a heart attack. And what are the symptoms of a heart attack? And what is the first aid that we can do? Because there are people who live in cities like Bangalore. I am from Bangalore. For me to reach the hospital, which is about 3 kilometers away from my house, may take even half an hour plus. So what is the first aid that I need to do in case of a heart attack? And how important is to have a stress-free life? Because all our business people here, they go through a lot of stress. Yeah. So it's about the symptoms of heart attack and what initial steps you should take. Yes, and So- what is the time of that golden hour? Is it? Golden hour, yeah. Yes, yes. The symptom of heart attack, basically there are typical symptoms, there are a few atypical symptoms also. So typical symptoms is sudden onset, retrosternal heaviness. Retrosternal means, sternum is your breastbone. The center of chest is the sternum. And there is a sudden onset heaviness in the chest, in the center of the chest, and which can have a manifestation of severe pain also, or just in heaviness, which can radiate to your left arm or right arm, or you can go to your jaw or your back, and it's gradually increasing in severity. And also associated with the sweating, uneasiness, and feeling of impending doom. There's something worse is going to happen. The feeling of impending doom. It's a typical heart attack symptoms. And it can happen after your meal, after your lunch, or after dinner. So people usually just take it as like an acidity or gas disorder. But if this kind of symptoms happen for the first time in your life, you have not experienced it before, it usually is a heart problem. Acidity usually you keep on happening day in and out. कभी बार 5-7 दिन में कभी एक बार हो गया. But एक बार अभी बोला life में ऐसा discomfort कभी नहीं हुआ. And it's a form of heaviness or the burning pain in the center of chest with radiation to left or right arm or jaw and increasing in severity along with the sweating, and you can have dizziness also. So these are typical symptoms of major heart attack. But it can be a typical angina. Very short duration, comes and goes off. So that can be a minor thing, but it's not major. So major heart attack का symptom I have explained. ऐसा होता है तो you should go to the nearby medical facility. Preferably the center which is got to cath lab facility. Otherwise you go to nearby internist or MD physician. He will check your vitals. He will take your ECG. ECG will have a typical changes of heart attack. He will refer you to the cardiologist which has got a cath lab. Whenever there is an acute heart attack, every single minute is important. In every minute, you have 10,000 muscle dies, cardiomyocytes. So sooner the better, like he has told about the golden hour concept. So first 1 hour is very important. If you can rush to medical facility and your heart attack is diagnosed in time, then your life can be saved.
Immediately you rush to your center, and then they will, once you diagnose heart attack, they will rush you to the cath lab. And cath lab is a place where we operate. We do a diagnostic angiography. Angiography is a very simple test which can be performed in 15 minutes of time through your radial artery, your hands, your radial vessel. They put a catheter, go to both the vessels, inject a dye, and see in the fluoroscopy, and detect which is the culprit vessel. There should be a 100% thrombotic occlusion of one of the vessels whenever there is a major heart attack. What we do, we cross with the wire, we advance the thrombosuction catheter, a clot-sucking catheter over the wire and suck the thrombus. As soon as you relieve the thrombus burden, the patient have they have relief of the symptom, and then you put a stent just to fix it so that thrombus doesn't form again. This is a primary angioplasty or heart attack angioplasty. It's called the primary angioplasty. This is the most rewarding procedure in the world. It saves lives. And it can be performed in 40-45 minutes time in case of the heart attack. And it is like 24/7 emergency. All our hospitals, including our hospitals, are 24/7 cardiology backup with the 24/7 cath lab running for the heart attack patients. And this is the gold standard treatment. So one should not deny. कई बार क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक डायग्नोज हुआ, आपको बोला कि वो सेंटर जाओ, और वो बोलता है कि आपको इमीडिएट एंजियोग्राफी का जरूरत है. People think that they might be having some commercial interest. Let us take a second opinion, third opinion, and you lose your precious time. Your heart pumping is usually 55%. It can come down to 30% immediately, and within a span of hour, it can come down to 25%, and then you develop a symptom of heart failure, like fall in BP, increase in heart rate, lungs are congested, shortness of breath. Then it becomes a very risky affair. Once heart has gone down, pumping is gone down, then we have to put your heart support, like intra-aortic balloon pump support or impeller heart support, which supports your heart, and then we do a procedure. That becomes a risky. So time is very important. Time is muscle. You should not lose the golden time. If there is a major heart attack, go for the nearby cardiology setup, which is go to cath lab facility, and get the angiography angioplasty done. If it's a minor heart attack, that means there are two things. One is a stable symptom, like effort angina. Walking brisk, having a chest heaviness. As you cool down, you are relieved. That is effort angina. That is not an emergency, but you should consult your nearby physician or cardiologist so that ECG, echo, and treadmill can be done, which can detect you are going to have a heart attack in the future. A second is an unstable angina, which is not a major heart attack, but typical symptom just like heart attack, but your enzyme is normal, your ECG normal, your echo normal. Your ECG, echo, and enzymes are normal. That doesn't rule out that you don't have a heart disease. अगर आपका ECG, echo normal है, लेकिन symptoms typical हैं, और cardiologist कहता है कि ये symptoms typical हैं, although your ECG, echo normal, that means you don't have a major heart attack, but you can have all three vessel disease. If they suggest, then go for the investigations, whether it's a CT angiography or treadmill, and go for the next level angiography if required by the cardiologist. Sir, एक बहुत important question है. There is an important question for everybody because generally what happens, लोगों को कभी-कभी एक लंबे समय तक heavy heart feel होता है. बहुत minor होता होगा, लेकिन ऐसा कभी-कभी दिन में कभी-कभी उनको लगता है और वो बहुत दिनों से चल रहा होता है. It happens since long. उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं. शायद जैसा आपने बोला कि गैस्ट्रिक समझ के या दिन में उनको कभी लगता हो कि मेरे को होता ही है गैस्ट्रिक. सो कौन-कौन से वो टेस्ट हैं जो उनको करा लेने चाहिए अगर उनको ऐसा डाउट है? इट इज़ हैपनिंग फॉर लॉन्ग कि भाई वैसे तो उनको कोई कुछ लग नहीं रहा, बीपी इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, दे आर चेकिंग अप, बट हार्ट डिजीज़ है या नहीं, तो उसके लिए कौन से टेस्ट उनको कराने चाहिए तो उनका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए? ये मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले इनके क्वेश्चन का एक और मैं कि वंस यू हैव ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक तो कोई मेडिसिन, तो वन इज अ वेरी सिंपल, दैट इज अ च्यूएबल और डिस्पर्सिबल, दैट इज अ डिस्प्रिन. डिस्प्रिन, हाँ, एवरी हाउस होल्ड शुड हैव अ डिस्प्रिन टैबलेट. डिस्प्रिन इज इमीडिएटली डिजॉल्विंग. अगर आप उसको बकल कैविटी में रखते हैं, यू क्रश इट एंड इट गेट्स इमीडिएटली एब्जॉर्ब्ड बाय योर बकल म्यूकोसा. इट्स ए इंस्टेंट ब्लड थिनर. So Disprin is a tablet you can chew and go to the nearby center. Sometimes this Disprin acts so fast, it relieves you from the clot and you have a symptom relief immediately. So Disprin. Don't take the sorbitate tablet. The people of heart disease, they have this sorbitate tablet, which is sublingual tablet. You have to just keep it under beneath your tongue and get dissolved. That can cause a fall in the BP. So sorbitate is not for everyone.
unless you are a heart patient, it's always better to take a Disprin tablet, chew it, and it gets absorbed through the buccal mucosa as a clot. Now the question, आपने कहा डिस्प्रिन ले लें, अगर वो हार्ट अटैक नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपका सिर दर्द होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? और आप इन्वेस्टिगेशंस की बात करी कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन वी शुड गो फॉर, स्पेशली एट द एज ऑफ 40 years और बियॉन्ड दैट. आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एवरी ऑल्टरनेट डे वी डू ऑपरेट पेशेंट विद हार्ट अटैक हु आर लेस देन 40, 35, 36. अभी मैं आज ऑपरेट करके आ रहा हूँ, अभी मॉर्निंग में हिज एज इज 31 years. 31 years and he had an effort in China. Exertion पे उनको chest pain होता था. He is from Bhilwara. He had gone to Ahmedabad. Ahmedabad में उसका angiography हुई. He had 100% occlusion of his main artery. That is the LAD, left anterdiscending main artery, which supplies 60% of heart muscle. 100% occlusion. It was long occlusion. It requires a lot of hardware because patient was from Rajasthan, Rajasthan government beneficiary. So Ahmedabad cardiologist, he called me up. Can you do basically it's a complex procedure and requires a lot of money involved. So it's a Rajasthan government, so he can have some benefit. So he came to us and we did a angioplasty for that patient. He's at 31 years. तो ऐसा बहुत common है, 31, 35, 36. So age doesn't matter these days because we a Southeast Asian, we are genetically predisposed. हम आनुवंशिक रूप से इन हार्ट अटैक स्ट्रोक के लिए प्रिडिस्पोज हैं. पहले हमारे को ज़्यादा में एज में होता रहा, अभी कम होता है. तो we know the term epigenetics. Epi means environment, genetics means we are inheriting from our parents. So genetics is getting modified because of environmental factors, which include your pollution, what food you eat. इसलिए हमारे को बहुत कम एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं. देखिए जो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें आपका एक फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं जिसमें फास्टिंग लिपिड, फास्टिंग ग्लूकोज, HbA1c जो 3 months का ग्लूकोज कंट्रोल बताता है, योर ब्लड काउंट्स, CBC, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ये तो ब्लड सैंपल से हुआ. इसके अलावा एक यूरिन सैंपल, उसमें हम देखते हैं यूरिन में कोई प्रोटीन एल्बुमिन तो नहीं है या फिर शुगर तो नहीं आ रहा. इसके अलावा एक ECG, एक एकोकार्डियोग्राफी, एक ट्रेडमिल टेस्ट. ये सबकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है. कई बार बोलते साहब ECG को करा लिया, आप TMT क्यों कराते हो? ECG और इको ये बताते हैं कि पहले कभी आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं है. ECG echo is only abnormal when you have a heart attack in the past. या हार्ट का कोई वाल्व का डिसऑर्डर है, हार्ट मसल डैमेज है, तो वो एको में आएगा. ब्लॉकेज का हमेशा बताता नहीं. थर्ड थिंग जो स्ट्रेस टेस्ट जिसको आप एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, यू वॉक ऑन द ट्रेडमिल एट ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इंक्लिनेशन एंड ऑल्सो स्पीड, है ना. वी आर अलाउिंग हार्ट टू वर्क फास्टर एंड हेवियर. सो इफ देयर इज अ ब्लॉकेज द ECG चेंजेस विद एक्सरसाइज. If there are no blockages, ECG remains the same. If the resting ECG and exercise ECG is same, that means the chances of blockage are less. If the ECG changes with exercise, that means chances of blockage are there. We say treadmill positive. Then you go for the next investigations. Like if there is strongly positive, we advise coronary angiography, which is gold standard, can be done in 15 minutes time. You have to book a slot. Other thing is a CT coronary angiography. That is also a screening test, in which we do a CT scan. During CT scan, you do an injected dye. It is done just like a normal CT scan, and that gives us an idea. CT scan detects number 1, calcium score. Number 2, by injecting dye, we see the blockages हैं या नहीं है. अगर blockages हैं, तो then they refer for the angiography. Blockages नहीं है, then you go for the lifestyle modification. So these are the 1, 2, 3 line of investigation. Baseline is blood test, ECG, echo, treadmill. Second is your CT scan or the angiography, based on the report of the previous investigations. Sir, Rajamohan sir, you want to ask something? Hello, doctor. Increasingly, we see a lot of sportsmen dying on the field nowadays. Yes. We see that very often. Yeah. And other sad part is that we also see a lot of people dying in the age group of 30 and 40. I think you partially answered it saying that it's due to genetical modification, due to stressors and things like that. But why are the sportsmen dying? They are fit human beings, right? It's just perplexing. Can you add some points? Yeah, you asked about the sports person. The list of the sports person who had a heart attack or who died on the field. Latest is our own colleagues. अभी हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, उसमें क्रिकेट खेलते खेलते मतलब बॉलिंग रनअप के बाद में once his 6 ball had gone over गया, उसके बाद में he was going to fielding position, he collapsed.
ऐसे ही बैडमिंटन ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही वाज a junior colleague of us, and he was into जो competition चल रहा था बैडमिंटन टूर्नामेंट, and after during or once he finished his game, he started having chest heaviness, and he called up his hospital cardiologist. Yeah, I'm coming to your hospital, and while he was on the way, he collapsed in the car. He collapsed in the car. Young heart attacks are very common, 35 years, 40 years, and 45 years. Especially young, healthy people are dying because of heart attack. One thing is the genetics, epigenetics. Epi means, I told, it's about all environmental factors, which includes your pollution, your diet, what you eat. आज का जो हम खा रहे हैं वो सब, these are not, जो हम oil use करते हैं, जो हम vegetables लेते हैं, उनमें क्या pesticides use हुआ है. That's why the cancers, heart disease, strokes are very common. So these are the epigenetic factor, environment and the genetics. Third thing is, before playing any vigorous tournament or your cricket or badminton, you should have a basic checkup. You need to go for the checkup if you are going for the heavy activity like aerobic, like badminton playing or the cricket, or you're going for marathon. You should have basic check. Your blood test, your ECG or your treadmill, echo, if they're fine, then you go for the, and also in the gradual way. Sudden unaccustomed exercise can lead to cardiac arrhythmia and heart attacks. So you should have a gradual building. Yeah, if you start walking, you start for the 1 or 2 kilometers initially, then you increase by 500 meters to 1 kilometer every week or two. It's not like in the day one you started 4 or 5 kilometers and you are 6, 7 kilometers every week, and it should be gradual way, and you should know your body. Everyone should know your body, how much is your stamina, and what are your previous, your generation. Like for the orthopedic surgeon, he had a family history. Mother, father ko young age mein unko heart ka problem tha. So those who have a history of young heart attack in the family, like your father, mother, or brother, sister, less than 50 years of age, you should be very careful. You should follow strict lifestyle modification, go for the regular checks, and if at all required, we are encouraged to go for the CT coronary angiogram also. And like young people, and the way we are seeing, unless we take a like right step at this point of time, we'll be seeing more patients in the times to come. Any more question? Anybody asked to on? Yeah. Please, mic वहाँ तक पहुँचा दीजिए. It's okay. पहले आप में आप आ जाइए सर. नमस्कार डॉक्टर साहब. मेरा क्वेश्चन ये था, जो अभी यंग डेथ्स हो रही है, दो क्वेश्चन थे मेरे. पहले एक था, अभी यंग डेथ्स हो रही है, जैसे लोग अभी नया जनरेशन जितने भी है, ये 30-35 साल वाले लोग, they used to go to the gym and they are taking the proteins and each and everything, so it is a cause for them, because जो मैंने जितने भी अभी डेथ सुनी है, या कोई बॉलीवुड से है या कोई प्लेयर है, they are doing regular gym, they are regular conscious for their health, but suddenly they collapsed. तो उसके पीछे ऐसी कोई रीजनिंग है कि वो लोग इस तरह का प्रोटीन्स लेते हैं और करते हैं, या they have this stretch? Something is going very, it's very looks dangerous. अगर हमारे घर से भी कोई बच्चा जा रहा है तो कभी लगता है कि why he is going to the gym? तो इस तरह का कुछ वहाँ माहौल है या क्या, किस तरह, why the youngsters are collapsed? हाँ, इसमें कुछ चीज़ें अपने डिस्कस करिए. एक दो चीज़ मैं आपको ऐड करता हूँ. अभी कुछ ऑफ लेट पोस्ट कोविड का कईयों ने अभी ये भी बात चल रही है कि इज इट रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन और कोविड. डेफिनेटली कोविड और कोविड वैक्सीन से बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए, जो इट वाज itself is a COVID is a prothrombotic milieu. Prothrombotic milieu means there is a clotting tendency. Once you had a COVID infection, we have seen clot in the heart arteries, clot in the lung arteries, clot in the leg arteries, or stroke also. So post-COVID और COVID vaccination वो भी एक speculation था, और ये भी था कि कोविड से स्मोल्डरिंग मायोकार्डिटिस, दैट मीन्स मसल्स में जो इन्फ्लेमेशन था हार्ट की मसल्स में, उससे भी कोई कार्डियक अरिथमिया है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं. इन सब का तो रोल है ही, लेकिन इसके साथ में जो मेजर रोल है उन्हीं को हुआ है जिनको कि प्रीडिस्पोजिशन था बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. सेकंड जो आपने बोला कि प्रोटीन, देखिए जो ये सप्लीमेंट प्रोटीन है, वी डोंट एडवोकेट एज अ डॉक्टर, वी डोंट एडवोकेट एट ऑल.
काफ़ी यंग जनरेशन है जो अब काफ़ी मसल बिल्डिंग के चक्कर में काफ़ी सप्लीमेंट लेते हैं. वी ऑलवेज से टेक नेचुरल प्रोटीन. जो भी आप नेचुरल प्रोटीन ले रहे हैं, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, यू टेक एग, और जो भी आप चिकन विकन लेते हैं फ्रेश वो ले सकते हैं. लेकिन रादर टेकिंग प्रोटीन पाउडर, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, तो बहुत सारे हैं. आप सब दालें लीजिए, पनीर लीजिए, आप लेग्यूम्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए. इट्स रिच इन प्रोटीन. क्या होता है जब भी यंगस्टर्स को बोलते हैं ना कि यू टेक द प्रोटीन इन द नेचुरल, सो दे सेड, आप जानते हैं एक स्कूप इसका लेते हैं और हम दिन भर में कितना भी प्रोटीन खा लें अपना वेजिटेरियन, वो कहीं कॉम्पीट करता ही नहीं है. इज इट? नहीं, ऐसा ही कुछ प्रोटीन्स है जो हमारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज से जो क्लियर्ड है, रिकमेंडेड है, USFDA अप्रूव्ड है, वो कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं जो हम लीवर डिसऑर्डर वालों को भी देते हैं. उन चीज़ों को हम अलाउ करते हैं. नॉट अबाउट द XYZ जो जिम में इधर उधर रखे होते हैं, कई शेक पिलाते हैं, वो पिलाते हैं. वी डोंट रिकमेंड दैट. अगर कोई साइंटिफिकली प्रूवन प्रोटीन सप्लीमेंट है, वी कैन एडवाइज दैट. जो पुराने जमाने में आप दे रहे प्रोटीन एक्स आता था, प्रोटीन एक्स पाउडर, दैट इज फ्रॉम फाइजर. नहीं, उन बच्चों को क्या जवाब दें जो ये कहते हैं कि आपकी जो नेचुरल थिंग्स हैं उससे हम कितना पनीर खाएंगे, हम कितना स्प्राउट खाएंगे? नहीं, बोलो कि जितना आपको ये जरूरत है ना उतना आपको मिल जाएगा. कई सारे रेसलर्स हैं, मेरे को मालूम वे वेजिटेरियंस हैं. बहुत सारे रेसलर्स वेजिटेरियन. तो इसका मतलब ही नहीं है. इवन फास्ट बॉलर्स भी कई हैं जो मेरे ख्याल से वेजिटेरियन, जो वेंकटेश प्रसाद, जवाहर श्रीनाथ, सब लोग इधर ऑल वेजिटेरियन. सर ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं उनको जो सर ने दिए हैं अभी. वेजिटेरियन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मसल बिल्ड करने के लिए हमेशा नॉन वेजिटेरियन खाना है या हाई प्रोटीन आपको अलग से यू हैव टू टेक सप्लीमेंट. यू कैन टेक ए नेचुरल प्रोटीन. अरे यू कैन इवन ऑन इंटरनेट यू सर्च किस किस चीज़ में प्रोटीन है, वेजिटेरियन सोर्स है ना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. यू कैन टेक फ्रेश आप लीजिए, यू कुक एंड यू ईट. एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि है ना, हमारे जो इंडियन कुकिंग में है ना, वी ओवर हीट, उससे भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है. If we overheat anything, whether it's a plant-based vegetables or your protein, and it gets जो प्रोटीन पार्ट भी होता है वो सब डिस्टेबलाइज हो जाता है और जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है ना. इट गेट डिस्ट्रॉयड. सो ऑलवेज कुक इन जो आपको धीमी आंच में सीखना होता है. इट रिक्वायर्स लिटिल मोर टाइम. आप कभी होटल में जाएंगे और घर में भी जाएंगे तो कुक भी बहुत जल्दी बनाती है, बिकॉज दे जो टाइम का लिमिटेशन है. अदरवाइज इफ़ यू कुक इन स्लो आंच में सीखिए, आराम से सीखिए, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बरकरार रहती है. एंड टेक एवरीथिंग, बट इट शुड बी ए नेचुरल वन एंड फ्रेश. The last question, yeah, please. Hello, doctor. My question is, अभी जो भी discussion हुआ, it is all about how pre-heart attack. But my question is, after heart attack, most of the doctors suggest warfarin diet. How safe is it to follow that diet, and what are the measures to be taken after the attack? Free diet? Which free diet? Warfarin diet. I think it says vitamin K. Warfarin? No, yeah, no, warfarin diet. No, that is, warfarin diet is for the patients who are taking anticoagulation. And that we recommend after valve replacement or you have a clotting tendency. So warfarin is, you have to add vitamin K containing food like green leafy vegetables or tomato. This is not for everyone. This is not for heart patient. So 99% patients should take green leafy vegetables and tomato. This is just for the patients who have undergone a valve replacement and you are taking Nicomol, acetrom or warfarin. Warfarin diet is just for the few patients who are taking warfarin, not for everyone. And what is the diet to be followed after the attack? So I am asking this question is because my husband, 3 years back, he had got an attack. And like you said, it's genetic. We were not aware. It was just sudden and we thought it was gastric. So when we had taken him to the hospital, we were already very late. And he had undergone 2 surgeries. He's got 8 stents. And he's also got a blockage, and somebody's told him to follow the warfarin diet. And after the diet, the health became even more worse, is because it leads to internal bleeding. So I wanted to know, what is the diet to be followed after that? After heart attack or after angioplasty or the bypass surgery, or any patient with a heart blockage should follow the healthy nutritious diet which we have discussed. It's moderation of everything. You should check your glucose level, your lipid level. If the LDL cholesterol is normal, even with a patient with a normal cholesterol can have a heart attack. Your normal cholesterol doesn't make you immune for the heart attack. We are seeing like 50% of patients have a normal cholesterol. Still, you have to have a balanced diet. You are asking for the diet, and that includes your eat everything in moderation.
You can have a fat if your LDL is normal. If LDL is high, you should avoid dairy or bakery products and take plenty of vegetables and balanced amount of carbohydrate and balanced amount of protein. So have everything. It's not like a total no-no. हमारे जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं कई लोग तो उनको सब बॉइल्ड वेजिटेबल देने लग जाते हैं, खुद का खाना अलग बन रहा है उनको अलग से दे दिया. This should not be the case. The food should be same for everyone. It should be balanced diet which is palatable. वो खाना खा तो सके, आप उनको बॉइल्ड वेजिटेबल दो, ऐसा नहीं है. हम we don't say take oil in moderation. टैग आप जो भी आप देशी घी आप लेते हैं गाय का भी तो ले सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है. मेडिसिन आप ले ही रहे हैं, मेडिसिन कंप्लायंस शुड बी वेरी गुड. आप कभी भी अपनी मेडिसिन को इग्नोर नहीं करना है. कई बार लोग अपनी तरफ से कोशिश करने लगते हैं, बीपी कंट्रोल हो गया तो बीपी की डोज को हाफ कर देंगे, आप मिस कर देंगे, then BP again shoots and make more damage. Same with the diabetes, same with the heart disease. So medicine compliance should be good and diet should be like as per standard guidelines for heart patients, which includes everything. It's not absolute no-no. बहुत कोलेस्ट्रॉल हाई है और कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम फैट को बहुत मिनिमम कर देते हैं. We don't say कि कुछ भी मत लो, एकदम बॉइल्ड लो, ऐसा नहीं है. और सेम विद द प्रोटीन, यू कैन टेक प्लेंटी ऑफ प्रोटीन विच इज यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, एंड कार्ब एज पर योर गाइडलाइंस. वो सब बैलेंस्ड ऑफ एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन. जो भी चीज़ ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है तो स्वीट्स अवॉइड करिए, कार्ब अवॉइड करिए. अगर आपका लिपिड ज़्यादा है तो फैट को मॉडरेशन में लीजिए. अदरवाइज यू कैन टेक प्रोटीन, कार्ब, फाइबर, एवरीथिंग इन मॉडरेशन. I request like he has another schedule also and lunch is also scheduled. Please take the last question, and if sir has a time, you can interact one-on-one to sir. Yes, doctor, morning you have done an angioplasty to your patient. Now you are sitting very comfortably. Why I am asking this question is I am an advocate. We take the tensions of client, but we are worried. Should we worry or just leave that? What is the secret behind that? You are sitting very comfortably. That we must follow, or how to follow? That is the question, doctor. No, you should leave worry apart. That is not possible. And we have to do this procedure 24/7 very frequently. In a single day, we do a 7, 8, 9 complex angioplasties. ये आप आज की बात कर रहे हैं, हमने कल भी करी है और कल भी करेंगे, और एक ही दिन में कई प्रोसीजर करते हैं. और कई पेशेंट सिक भी होते हैं. दे आर वेरी सिक एंड दे हैव ह्यूमोडायनामिक, उनका बीपी फॉल हो रहा है, कभी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है. And at the same time, we have to maintain the flow of the patient in the हमारे पेशेंट्स जो सिक पेशेंट आ रहे हैं उनको एंटेन भी करना है, उनको डायग्नोज भी करना है, उनको पोस्ट भी करना है और प्रोसीजर करते जाना है, चलता है. तो ये देखिए सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस सबको रहता है, हमारे को भी रहता है, बट वी शुड लर्न टू मैनेज अवर स्ट्रेस. एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट अ डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजिंग कैपेसिटी. उसके लिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, यू शुड हैव गुड स्लीप इन द नाइट. रात को अच्छे सोइए. डोंट आपको टाइम बचाने के लिए 6 घंटे ये नहीं है ना. आपकी स्लीप अगर 7 आवर्स की है, 8 आवर्स की है, यू शुड हैव गुड स्लीप इन द नाइट. आज 6-7-8 घंटे आप आराम से सोइए. सेकंड इज दैट मॉर्निंग आवर्स शुड बी फॉर यू. सुबह उठते आप मोबाइल मत देखिए, 1 आवर आपके पास में होना चाहिए. गो फॉर अ वॉक इन द नेचर. आई टेल यू, आप 35-40 मिनट्स ऑलवेज गो फॉर द मॉर्निंग वॉक. And then you do breathing exercise, stretching. For me, I got a yoga instructor since 2017, like अभी 7-8 years है. और that is a good kind of एक वो बन जाता है, एक routine बन जाता है. So it is a good, you should have good morning routine, and then you have to keep yourself हमेशा, even in the daytime, you are following. अगर stressful है आपको, जिससे आपका जो advocate बता रहे हैं आपको कुछ हुआ तो, लेकिन once case is over, you should relax for some time, and then again you can go to the next one, and उसको जाने दें. Let go everything. You should learn to forget. वो तो बहुत एक important art है. That comes with the meditation and regular practice of meditation. 20 minutes daily you should follow the meditation. Meditation की बहुत सारे आपको वो चीज़ मिलेंगी. आपको हर लोग कराता है, रविशंकर जी, श्री रविशंकर कराते हैं या सदगुरु कराते हैं. लेकिन you develop your own meditation technique. Sit in the nature, breathe quietly, introspect and relax. And that's very important. That is equally important as your physical activity like exercise, your yoga, stretching, and then meditation. ये अगर आपको चलेगा ना, you will become a master. Then you can manage multiple level of stress. Fantastic. Okay. Thank you, Dr. Sanjeev. Myself, Dr. Gopal Krishna, and thank you very much for giving us a very elaborate, comprehensive information about heart. मैं 2 लाइनें कहूँगा कि खतबा किताबों में बड़ी चर्चा सुनी थी दिल की. खतबा यानी किताबें शायरों में बड़ी चर्चा सुनी थी दिल की, जो चीर के देखा तो कतरा एक हो निकला.
और मैं एक बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न पूछता हूँ, किसी को देख के दिल इतना धड़कता क्यों? एक बार वापस बोलिए। दिल वो कुछ समझ नहीं आया सर, एक बार वापस बोलेंगे? गालिब ने 2 लाइन लिखी है दिल के बारे में, हाँ हाँ कि बड़ी चर्चा सुनी थी दिल के बारे में खतबा किताबों में, उर्दू का वर्ड है खतबा किताब, यानी शायरी की किताबों में दिल 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 बहुत होता है, सारे गाने दिल पे बनते हैं। पर जब चीर के देखा, दिल को चीर के देखा तो कतरा खून निकला, यानी कतरा खून का निकला और कुछ नहीं निकला। खतरा खून का निकला। चर्चा काफी पड़ी, देखी सुनी, लेकिन चीर कर देखा तो, और चीर कर वो सर जैसे लोग ही देख अब पाते। आगे मैं पूछ रहा हूँ कि किसी किसी को देख के दिल इतना उछलता क्यों? देखिए, दिल है, दिल का काम उछलना ही है, और ये डिपेंड करता है आप किसके साथ में हैं, कौन आपके सामने है, और ये ख्वाहिशों पे भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ख्वाहिशें तो जिंदा रहनी चाहिए, ऐसी की बात है, और इसी का नाम जिंदगी है। अगर आपके कुछ मतलब कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग और कुछ चेंज नहीं है आपके आपके लाइफ में, अगर कुछ आगे, यू शुड हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन एवरी रेस्पेक्ट, योर वर्क, योर लाइक फॉर हेल्थ एंड एवरीथिंग, you should have a change, challenges in your life, so keep yourself young. So thank you so much on behalf of RMB family. It was wonderful to have you, and I'm sure कि हम 1-1.5 घंटा और बात कर सकते हैं, सर को सुन सकते हैं, because बहुत सारी important information inputs इन्होंने हम सबको यहाँ पर दिए. We would like to thank, and I request Arvind Batra please come up on stage and give a memento to Dr. Sanjeev Sharma. Please memento लेकर आप आए यहाँ पर, और सर को हम यहाँ पर hand over करेंगे. Please, Dr. Sanjeev Sharma, big hand for him. Thank you so much, sir. I also request Dr. Sumit Taneja. Sumit sir, कहाँ गए? एक बार आइए sir. And Abhishek, please come on stage. Thank you, sir. Please. On behalf of RMB family, we would like to thank EHCC Hospital also. EHCC Hospital also. So सुमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि EHCC Hospital को हम यहाँ पर थैंक यू कहेंगे उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए. EHCC Hospital is one of our sponsor, and they are bringing Dr. Sanjeev Sharma here for us. Thank you so much. On behalf of EHCC Hospital, Abhishek is receiving this memento. Thank you so much. So ladies and gentlemen, now it's time for a break. Let's have a lunch break. We'll be back at 3 o'clock. So enjoy your lunch, enjoy the day, and we shall come back at 3 o'clock in the hall. Thank you.